नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2023 हम लोगों की जिंदगी में एक पूरा कायाकल्प लेकर आए, प्रगति के नए सोपान हम लोग चढ़ते जाएं और हर तरफ से हम लोगों की एक उन्नति हो, एक खुशहाली का वातावरण हो और आपस में कोई भी भेद न रहे। आयुष के कंपोनेंट्स में आपस में यूनिटी हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। We welcome you all on 1st January of 2023. Now 2022 has gone and given us a blessing of more than 250 webinars, and we hope in this new year we will be able to conduct 400 webinars as per my plan in 365 days. So thank you for your blessings, cooperation, valuable guidance, support, and everything we have done in our journey of 2.5 years. I would like to welcome Vishnu Prasad Sharma ji. I would like to welcome V.K. Agnihotri sir, K.K. Pandey sir, Kamini Dhiman ji, Neha Malik ji, Nishant Tripathi ji. Welcome ji. Welcome, Swagatam. Now I would like to request Professor Vishnu Prasad Sharma ji for his welcome blessings. Okay, thank you. Respected, distinguished guests, eminent speaker, ladies and gentlemen. First of all, I offer my best wishes to all of you. Happy New Year 2023. Today we have webinar on VASUDHAIVA KUTUMBAKAM. This important subject. In this evening webinar, we have eminent speaker. I want to welcome Professor Kamlesh Kumar Sharma, Pro Vice Chancellor, Jyoti Vidyapith Women's University. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. Madan Thangavelu, genome biologist from Cambridge. I welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. AYUSH Sharma, University of Mauritius. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Dr. K.C. Priyadarshini, consultant surgeon, Wakala, from Wakala. Welcome you, madam. Next, I want to welcome Dr. Shekhar Annam Bhotla, President, Association of Ayurvedic Professional, North America, Pennsylvania, USA. Welcome you, sir. Next, I want to welcome Buddha Harish Kumar Parma, Canadian College of Ayurveda and Yoga from Canada. I welcome all the eminent speakers, distinguished guests, ladies and gentlemen, to this evening webinar on VASUDHAIVA KUTUMBAKAM, most important subject. Once again, I welcome all of you. Thank you. Namaskar. Over to Pawanji. Thank you, sir. Thank you very much. Now I would like to request Professor V.K. Agnihotri sir for his blessings. Thank you, Professor Pawan Kumar Sharma ji, and नमस्कार सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं. We wish a very happy new year, which is a Gregorian new year, to all of you. May God bless us to carry this system, Ayush system, to its newer heights. जैसा अभी पवन जी बोल ही रहे थे कि हमने 2020 से जो काम शुरू किया, उसमें विगत वर्ष में 2022 के पूरे 12 महीने में लगभग 220 से कितनी वेबिनार कर ली. टोटल हमारे पास 527 हो चुकी हैं. तो 365 वेबिनार्स का इस वर्ष करने का इरादा है.
आपकी आवाज नहीं आ रही सर, यू आर म्यूट। Kindly unmute yourself, sir. Your video is not also available. सर Yes. हाँ, उनको वैद कमलेश जी का फोन आया कि उनको आज का लिंक नहीं आया, इसलिए जुड़ भेज नहीं दिया पा रहे। मैंने, 2 बार भेज दिया। अच्छा अच्छा। तो जहां एक तरफ हम संख्या वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे अपने कार्यक्रम के अनुसार, उसके साथ साथ ये भी आवश्यक रहेगा कि हमारी आयुर्वेद के विकास की जो यात्रा है वो गुणवत्ता सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए से नए मानदंड स्थापित करे और इसकी स्वीकार्यता सार्वभौमिक विश्वजनीन बढ़ती चली जाए जैसी कि बढ़ रही है, तो हम लोगों के ये प्रयास वेबिनार के क्रम में बहुत ज्यादा सार्थक होंगे। हम आज लेके चलते हैं, वी हैव टेकन दिस टॉपिक ऑन टुडे, दैट इज वसुधैव कुटुंबकम, and fortunately or unfortunately it's very difficult to answer it in any world language. It is in Sanskrit language and Sanskrit language सभी languages की मदर है, तो इसको untouched unaltered रखते हैं वसुधैव कुटुंबकम। बट हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, इसके रेफरेंस में क्या है वो याद रखना बहुत जरूरी है, और वो है अयम निजः अपरो वेत्ति। जब ये भावना हमारी समाप्त होगी तभी वसुधैव कुटुंबकम का विषय बन पाएगा। अयम निजः अपरो वेत्ति गणना लघु चेतसाम। अगर हम अल्प बुद्धि वाले हैं तो हम यह मेरा वो तुम्हारा ये इस ढंग से अपना पराया करते हैं, तो हमारी गिनती लघु ज्ञानियों में मानी जाएगी, अल्प ज्ञानियों में मानी जाएगी। इस स्तर से उठ के ये कहा गया था कि उदार चरिता नाम तो अगर हमको वसुधैव कुटुंबकम की परिभाषा को परिभाषित करना है तो हमको लघु चेतसाम के बजाय उदार चरिता नाम होना पड़ेगा, और वो उदार चरिता नाम की जब बात आएगी तो हमारी ही ये आंखें हमको विश्व को एक कुटुंब के रूप में देख पाने में समर्थवान हो पाएंगी। तो हम इसका केवल लास्ट पार्ट जो लेते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, उससे कहीं पहले हमें अयम निजः अपरो वेत्ति की लघु चेतना को से बाहर निकल के उदार चरिता नाम वाली जो व्यवस्था है, जो सोच है, वहां पहुंचना होगा। तभी हम वसुधा को जितने भी जीवित हैं, जितने भी प्राणी मात्र हैं, उनको अपना कुटुंब ऐसा मान पाएंगे। एंड देन द पैरामीटर्स ऑफ अ फैमिली विल बिकम द होल यूनिवर्स। On when we will talk like that, we will just join them with the Vedic concept, Vedic culture, Vedic civilization, or which is the Atharved, which is Ayurved. आयुर्वेद में ये व्यवस्था है कि अयम अपरः से हटके हम वसुधैव कुटुंबकम के मौलिक भाव में जाएं, तो हमारी समुद्र की सीमाएं, पहाड़ों की सीमाएं, भौगोलिक सड़कों की सीमाओं से बाहर निकल के हम जहां कहीं भी मिलेंगे उसके हितैषी बनेंगे, उसके हितकारी भाव बताएंगे, उसके हितकारी गुण लेंगे। और आज की हमारी वेबिनार का जो मुख्य टॉपिक है, इस पर हमारे विद्वान जो आज चर्चा करने जा रहे हैं, तो हमारी खुशी की बात है कि हमारे उसमें अधिकांशता प्रोफेसर वैद्य कमलेश शर्मा जी को अपने में से लेते हुए बाकी हमारे सभी आचार्यगण विदेश में स्थापित हैं इस समय। तो हमारी ये वसुधैव कुटुंबकम की जो परिकल्पना है वो आज चरितार्थ होने दिखाई पड़ने जा रही है। इस शाम को हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को कहते हुए, सोचते हुए और प्राप्त करते हुए आज के ग्रेगोरियन नव संवत्सर के प्रथम दिवस को आज हम लोग अलंकृत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और पवन शर्मा जी को हम खुले अग्रिम प्रश्न के लिए वापस करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। आदरणीय प्रोफेसर कमलेश वैद्य जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। स्वागतम, शुभ नव वर्ष सर, शुभ नव वर्ष, शुभ नव वर्ष। अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन सभी का, इस सारी सृष्टि का, प्राणी मात्र का, जीव जगत, चराचर जगत का, जड़ चेतन का अभिनंदन। स्वागतम। चलायमान में आप भी हैं, चलायमान जगत में आप भी हैं। इस समय बेल्ट बनी हुई है, चलायमान है। साइड में थोड़ा खड़ा हो गया, एकाग्र होकर के आप लोगों के साथ जुड़ सकूं, इसलिए थोड़ा साइड में लग गया मैं। तो क्या अब मुझे निवेदन करना है कुछ? जी जी, आप शुरू करिए। उद्घाटन करना है सर, आज के नए साल का शुभकामनाओं आशीर्वाद के साथ उद्घाटन करना है।
उद्घाटित हुआ है, हो ही रहा है, प्रतिफल उद्घाटित हो रहा है। जिस विषय की प्रस्तावना अभी आदरणीय अग्निहोत्री जी ने की है, इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए निवेदन करूंगा कि संसार में जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन संस्कृतियों में वैदिक संस्कृति या सनातन संस्कृति का ही ये विचार भाव आज उस पर परिचर्चा जिस पर हम करने वाले हैं। अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो चौथे चरण का जिक्र उन्होंने किया, पर प्रथम 3 चरण ये बात इंगित करते हैं कि इन 3 चरणों का सार चौथे चरण में आ रहा है कि ये अपना है, ये पराया है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये बीज हमको मिलता कहाँ से है? जब प्रथम प्रश्न ये उपस्थित हुआ कि आप म्यूट हो गए सर। म्यूट हो गया। हाँ अब ठीक है। अब ठीक है जी, आपकी दर्शन नहीं हो रहे। आप म्यूट हैं। अब ठीक है हाँ जी, हाँ जी। जी। दर्शन नहीं हो रहे हैं और स्पर्शन तो बहुत दूर की कड़ी है। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। जय हो जय हो। तो जब सर्वप्रथम सृष्टि का पहला प्रश्न उत्पन्न हुआ कि को हम, मैं कौन हूं, उसका समाधान जब निकलता है, उसमें से सारी वैदिक संस्कृति के ये संदेश हमको प्राप्त होते हैं। जब मैं प्रश्न का उत्तर खोजता हूं कि को हम, मैं कौन हूं, तब फिर मुझे प्राप्त होता है उसका उत्तर कि सो हम, मैं वही हूं। मैं वह कौन? तत्त्वमसि, जो मैं हूं वही तुम हो। यानी इस सृष्टि में मैं कौन हूं, यानी मैं जो कुछ हूं, मैं उस चराचर जगत का, उस जो सृष्टि व्यष्टि समष्टि सृष्टि और परमेष्टि का अंशभूत हूं, उसी का एक अंश तुम हो। इस प्रकार का भाव जब मन में आता है, तब फिर मुझे प्राणी मात्र के प्रति, जीव जगत के प्रति एक एक महत्व का भाव जगता है। आप देखिए, जब चरक संहिता शुरू भी होती है तो वहां सबसे पहला उद्घोष महर्षि भरद्वाज करते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है इस आयुर्वेद का यहाँ लोक अवतरण करने के लिए। भूतेषु अनुक्रोशम, वहां मनुष्येषु अनुक्रोशम नहीं लिखा है, वहां उन्होंने लिखा भूतेषु अनुक्रोशम, यानी प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखते हुए आयुर्विद्या के विविध प्रकार हो, चाहे आयुर्विद्या हो, चाहे धनुर्विद्या हो, चाहे पशु आयुर्वेद हो, जो भी जितने भी आयुर्वेद की विधाएं हो सकते हैं, उन सब का इस लोक में अवतरण करने का उद्देश्य वही उनका रहा है। और ये बात कोई अनादिकाल से चली आ रही है। जब हम इसको सनातन कहते हैं, हम पुरातन नहीं कहते हैं इसको, हम कहते हैं सनातन। जब पुरातन कहते हैं तो कोई बहुत पुरानी चीज ऐसा हो सकता है, लेकिन सनातन जिसे कहते हैं वो बहुत पुरानी भी है और अद्यतन भी है, वही चीज सनातन कहलाती है। तो इस सनातन संस्कृति का यह जो संदेश है कि प्राणी मात्र के प्रति ही केवल नहीं, वनस्पति मात्र के लिए भी नहीं, जल जंगल जीव जंतु नदी पहाड़, इन सबको अपनी जीवनचर्या में समावेश करते हुए कहीं न कहीं इनके संरक्षण का भाव जब देते हैं, तब हमें वसुधैव कुटुंबकम का भाव लगता है। और इसके अनेक उदाहरण हमारे सनातन संस्कृति के गौरवशाली इतिहास में मिलते हैं। और ताजा इतिहास तो अभी हम सबके ध्यान में ही है। जब सर्वप्रथम भारत देश ने इस कोरोना महामारी के लिए वैक्सीन जब तैयार की, तो जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन देने की बात आई, तो इस देश को तथा कथित पूंजीवादी देश का एक विरोध का सामना करना पड़ा कि आप मुफ्त में दे रहे हैं, मुफ्त में आप कैसे दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि मुफ्त में देने का हमारा हेतु यही है कि वसुधैव कुटुंबकम, और जो पैसे देकर ले सकते हैं उनको पैसे देकर लेंगे, लेकिन जो संसार के ऐसे हमारे बंधु हैं उनको हम मुफ्त में भी देंगे। तो जो सनातन का भाव अनादिकाल से चला आ रहा था, अब तक भी वो विद्यमान है। और इस वसुधैव कुटुंबकम का जो एक विचार है, संदेश है, आज हमें इस अवसर पर इसके सामने चुनौतियां कौन सी हैं उसका विचार भी करने की जरूरत है कि इस वसुधैव कुटुंबकम के हमारे इस संस्कार को, इस भाव को, इस विचार को चुनौतियां आखिर कहाँ से मिल रही हैं, इसका विचार भी हमको करने की जरूरत है। तो हमारे समाज में यूं कहें कि विश्व परिदृश्य पर, विश्व समाज में जहां कर भी, चाहे वो पूंजीवाद रहा हो, चाहे साम्यवाद रहा हो, ये दोनों के दोनों विचार ही हमारे इस वसुधैव कुटुंबकम के भाव के खिलाफ विरोधी रहे हैं। जहां पूंजीवाद में केवल व्यक्ति केंद्रित सत्ता रहेगी, वहां पर भी उन्होंने ये माना कि मैं और मेरे लिए,
जो कुछ अर्जन सर्जन कर सकूं वो सिर्फ मेरे लिए है। जबकि हमारे सनातन संस्कृति का वाक्य मैं मेरे लिए नहीं, तत्त्वमसि। ऐसा जब हम कहते हैं कि तो जो कुछ मेरा भी है वो ईशावास्य उपनिषद का वह जो सूत्र है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीत है। ऐसा उपनिषद जब हमको कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी आवश्यकता जितना सा इस प्रकृति से ग्रहण करूं, बाकी सब वितरण करते हुए सारी सृष्टि को देते हुए फिर मैं उपभोग करूंगा, तो इस सृष्टि का संतुलन बना रहेगा। और जब इस प्रकृति से मैं कुछ प्राप्त कर सकूं अपनी आवश्यकताओं जितना सा, लेकिन इससे कहीं अधिक जब शोषण का भाव मेरे मन में आता है तो फिर मैं सृष्टि के शोषण में लगता हूं। वो अनेक प्रकार की समस्याओं का कारण बनता है। तब हमें फिर ये एक योनों में एक प्रस्ताव पारित करना पड़ता है कि सेव द अर्थ, पृथ्वी को बचाओ। पृथ्वी को बचाने से पहले पृथ्वी को बिगाड़ने से रोकना पड़ेगा। और उसके लिए हमारा संदेश मिलता है, पृथ्वी सूक्त हमें संदेश देता है कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या, इस सारी धरती की मेरी माता है और मैं इसका जब पुत्र हूं, तो जिस प्रकार माता का भाव मेरी जननी के प्रति रहता है, वैसा ही श्रद्धा भाव, वैसा ही आदर भाव इस सारी सृष्टि के प्रति रहेगा, पृथ्वी के प्रति रहेगा। तो इस पृथ्वी पर रहने वाली हर संतान, उसके प्रति मेरा एक बंधु भाव है। और इस बंधु भाव का जागरण जब हमारे मन में रहता है, तब हम इस वसुधैव कुटुंबकम को केवल सिद्धांत रूप में नहीं, केवल आदर्श वाक्य के रूप में नहीं, अपितु जीवनचर्या में, व्यवहार में, आचरण में जब लाते हैं, तब ये संदेश प्रभावी होता है। संदेश दूसरों के लिए प्रेरणादायी भी बनता है। तो जिस संस्कृति ने हमको ये संस्कार दिया है, उस संस्कृति की अनुपालना में हम जब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो कुटुंब कहते ही इस सृष्टि में प्राणी मात्र, जंतु, जीव जगत जितना भी है, उसके प्रति बंधु भाव मेरा होता है कि मैं जिस परमात्मा का अंश हूं, उसी परमात्मा का अंश तुम्हारे सामने भी है। जिसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में कहा है कि सिया राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। प्राणी मात्र में मैं अपने ही आराध्य के जब दर्शन करने लगता हूं, जब डॉक्टर हेडगेवार कहते हैं कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, तो ऐसे में इन महापुरुषों के जो वाक्य हैं वे हमें इस प्रकार का संदेश देते हैं कि जीव दया प्राणी मात्र के प्रति, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे आप फिर म्यूट हो गए सर। अंतर से किसी न किसी दूसरे शब्दों में हमें संदेश दिया है। इस जीव जगत, प्राणी जगत, इस पृथ्वी पर जितने भी उत्पन्न हुए लोग हैं, जीव हैं, जंतु हैं, इन सब के प्रति मेरा जो दर्शन है, दृष्टि है, वह बंधु के समान रही। और जब बंधु बंधु भाव जब जगता है, तब फिर जब ममता आती है, जब ममता आती है तो ममता का परिणाम ही समता आता है। और इस आधार पर हम अयम निज परोवेत गणना लघु चेतसाम, छोटे मन के लोगों के ये गणना रहती है, ऐसा विचार मन में आता है जब हम विशाल हृदय रख करके बात करते हैं, जो कि हमारी सनातन संस्कृति का संस्कार भी है, सनातन संस्कृति का अभ्यास भी है। अनादिकाल से लेकर चाहे वो रंतिदेव हुए हों, चाहे शिवी हुए हों, चाहे फिर आज कोरोना काल का हो, एक निरंतर श्रृंखला संसार के सामने आदर्श बनकर प्रस्तुत होने की हमारी सनातन संस्कृति की रही है। आज जब आंग्ल नववर्ष हम मनाने जा रहे हैं, उस समय भी ये देश, ये धरा सारे संसार को ये संदेश देती है कि हम सब प्राणी मात्र के प्रति बंधु भाव यदि रखेंगे, तो हम सब आज जितनी समस्याएं संसार के सामने उठ रही होती हैं, उनका समाधान इसी मंत्र के माध्यम से हम प्राप्त कर सकेंगे। इतना निवेदन करना मुझे इस अवसर पर उपयुक्त लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपके ओजस्वी मार्ग निर्देशन के लिए नमन, नमन सर, नमन। आप जब बोलना शुरू करते हैं तो फिर वो जब रुक जाते हैं तो कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। बहुत बहुत उत्तम विचार सर, बहुत उत्तम विचार। क्षमा करें, मेरे मित्र की माताजी का देहांत हो गया था, मैं मोक्ष धाम से बाहर आकर के आप लोगों से जुड़ पाया हूँ। आपका संदेश आया तो उनको मुखाग्नि दी गई थी, मैं मोक्ष धाम के बाहर ही आकर आप लोगों से जुड़ पाया हूँ। ये कल के मोदी जी को संदेश में मानता है कि मोदी जी ने जो किया, कम से कम हम भी कुछ तो करें, सीख तो सही। जय हो, जय हो, जय हो, नमन, शत शत नमन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। मैं अभी एक बार म्यूट होऊंगा, फिर जुड़ूंगा। जरूर जरूर सर, जरूर सर। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैं मेरे खोए हुए मुखिया को बुलाऊं जो आज मेरे को दर्शन दिए हैं, उसके पहले मैं और खोने वाली मेरी बहन कामिनी धीमान जी को आमंत्रित करता हूं
कि फिर वो रहेंगी नहीं साथ में, ये मुझे दर्द होगा। आज उनकी वाणी को जरूर सुनना चाहेंगे आदरणीय कामिनी धीमान जी। उसके बाद हमारे सर मदन थंगवेलु सर। स्वागत है सर, स्वागत है। कामिनी धीमान जी, मैडम कामिनी धीमान जी, am I audible? Are we audible to you? शायद वो इस दूरभाष यंत्र के पास नहीं है, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा पुराने साल में खोए मेरे मुखिया, मेरे बड़े भाई, मेरे गार्जियन, मेरे गाइड आदरणीय श्री मदन थंगवेलु सर को, जो नए साल में मिले। ये नए साल में मिलते रहेंगे, ऐसी प्रार्थना के साथ उनको आमंत्रित कर। स्वागत है। पवन जी नमस्कार। नमस्कार। आयुष जी प्रणाम जी। विष्णु प्रसाद जी प्रणाम जी। प्रणाम सर, प्रणाम। ओ पांडे जी प्रणाम जी। नमस्कार, प्रणाम। अच्छा, पवन जी थैंक यू अगेन को आपने सबको, you have brought everybody together on the first day of the new year, so welcome all, best wishes for 2023. I'm hoping 2023 will be the best year of all the years we have seen till now. We have reached the inflection point. अब शर्मा जी ने जो बताया बात। नमस्कार जी, त्रिपाठी जी नमस्कार, निशान जी। हमने कहा मुझे आप भूल गए। जो बात जो शर्मा जी ने जो बताया, this is very important, how we interpret this word. I want to put this in the context of India's presidency of the G20 nations. And India has taken on a very big task at bringing together the top 20 economies of the world and becoming the president for that for 1 year. Till the 30th of November this year, India has a big responsibility. Ismay, what is the role that India wants to play, and where do we search for a unifying principle in this engagement? And जो शर्मा जी ने जो बताया बात, उसमें काफी कुछ है. But I want to look at it slightly from our ongoing engagements. I was very fortunate to be in India I arrived in Mumbai on the 8th of December last year, and I was in India till the 21st of December. The reason for coming to India was to attend the 6th Ayurveda for Cancer conference held in Vagoli in near Pune in Maharashtra. Now, this is a theme that unifies the world, this disease, and what we have been discussing in AYUSH SAMRIDDHI is also something that is unifying the world. And within this, how do we bring together a new level of cohesion in the world? How do we understand health? Jo Kamlesh ji ne jo bataya baat is the cohesion that we are looking for. And within that is the concept of one earth, one family, one health. Are we understanding this correctly? And I raise this very frankly. Are we understanding the challenge ahead? Are we understanding the opportunities we have ahead? Are we in India, the Ayush fraternity, the Ayurveda fraternity, are we a family? Pavanji has given us a major platform over the last 2 years now. He has shown how we can come together as a family, discuss opportunities, discuss our perspectives, discuss ways ahead for the future. And this is a challenge for all of us. India's, on traveling, the first thing I noticed on arriving in Mumbai was a big poster with Modi ji announcing the presidency, welcoming people to India, the mother of all democracies.
announcing that we have taken on a big responsibility and a big challenge. Now, how much can we understand in this area, and how much can we offer the world? I'm hoping that the canvas is a very large canvas. I'm hoping that we will learn something from these open discussions. Now, I want to touch briefly on looking at the world as a family in the context of one disease, which is the cancer context. I want to look at the world in the context of youngsters, which is our future generation. And in there, I'm looking at everybody, starting with the first year students who are coming to study all the modalities, AYUSH modalities. Are they appreciating this? Are our young administrative officers who are joining our institutions as young new recruits coming to become the foreign service officials and administrative service officials, etc.? Are they understanding the seriousness of this challenge and the size of this task? And when we go into all of these areas, I feel there are big gaps. I don't think we are fully understanding the seriousness of this matter. We are presenting it very lightly to the world as one big family. And we don't fully understand the responsibility we have when we make this comment. And what I have learned in this short trip to India from Pune is that it can be done. In Wagholi, the commitment of just one family to look at cancer has brought the National Cancer Institute to India. Dr. Jeffrey White, who was the director of one of the sections of the National Cancer Institute, was with us, wanting to learn from India. From Pune, I went to Delhi, to the Delhi Pharmacy University. And once again, we could see a cohesion there, which is what India is able to offer. And finally, I could also, Agnihotriji, I could also visit our prestigious and very important Tibia College in Karol Bagh. And it was a delight to be there with the director of AYUSH Directorate for Delhi State, Dr. Manchandaji, and to see the cohesion there in the college, in the community. India clearly has all of these strengths that we can offer the world. And I'm hoping, Pawanji, by keeping this platform available to all of us, we will spread that message of unity. This is an example of VASUDHAIVA KUTUMBAKAM in action, what you have enabled for us in the last 2 years. And we wish to see this go from strength to strength. And we wish to continue to use this platform as a way to promote that one important message. There will be different perspectives, and there will be different opinions about how we interpret this. But I feel that through this open platform and the kind that you are growing, we will discuss, learn from each other, and take forward this important task, particularly till November 30th task that India has in September. G20 meeting will be held in Delhi. So up until that point, if we can somehow inspire the G20 cabinet with some of the things we are discussing here. I know Pawanji has been discussing for a long time about Asian Health Organization and the demand for that, why we need this kind of thinking in the global village. The global village has gone beyond the global village. As Kamlesh Sharmaji said, the COVID has made big changes in the global village. There have been forces that are making us
think more and more about delocalization. That means we need to deglobalize in this rapidly globalizing village. And I'm hoping that through discussion and learning from each other's thoughts and perspectives, we will arrive at a new vision for the future. Pawanji, thank you again for making and keeping this platform alive and open. We have many people we will hear from, and we look forward to learning. I can see Ishji has joined us from Mauritius. We will looking forward to learning from everybody, Pawanji. We are Thank you very much. In a moment of great opportunity for India, and I'm hoping that messages from India will touch the hearts and minds of every nation around the world, every citizen in every nation in the world, and that's a big responsibility. Thank you, Pawanji, for having me here today. Thank you, sir. We are fortunate to have you here, sir. Apologies again. Thank you. Apologies again for my absences, because there have been unending travels, and again the new year starts with visits to Brussels and things that go on. But we will be in touch, Pawanji, whenever possible. Thank you very much, sir. Best wishes for 2030 for all of us here on this platform today, and all of those who are joining us on YouTube today, or perhaps will view our recording in the future. Namaste. Thank you. Thank you very much, sir. Very nice. Your blessings are essentially needed for this platform, sir. We are yours, you are ours. This is VASUDHAIVA KUTUMBAKAM. You are thousands of miles away from us, but we consider that you are in our hearts. So we are not too far. We are not too far. Thank you. Thank you very much, sir. Now I would like to request Dr. Ish Sharma. Welcome, Dr. Ish Sharma ji. Welcome. Thank you very much, Dr. Pawan, and very happy New Year to all. Happy New Year. Happy New Year. Ishji, namaskar ji. Namaskar, Madan ji. Pranam ji. Very happy New Year, sir. So today our subject is VASUDHAIVA KUTUMBAKAM, and now please guide us how to make this happen and recognize our Ayurveda, Ayush, in maximum of the countries where it is not. Surely, as this is the message by Honorable Prime Minister Modi ji, that Ayurveda is India's gift to the world, because India, like Indian philosophy, did believe like welfare of all through like Sarve Santu Niramaya and Vasudhaiva Kutumbakam. So we all, in a way, knowingly, unknowingly, all of us, we believe that we have to do something to like propagate Ayurveda out of India, and the goodness cannot be like limited to India only. And that is how various efforts started, and they have picked a real pace in last a few years, especially like in last 1 decade, where we could see like multiple activities happening and new innovative thoughts coming in, where for the first time like Jamnagar was declared as a national institute of national importance, INI, and also it was a political victory to have GCTM, Global Center for Traditional Medicine, April 2022. So efforts are going on, and I believe around 16-17 countries fully recognize Ayurveda, and this will be the best thing to like launch Ayurveda full-fledged over there. Somehow it is like has been more than pending for a real very long time. Ayurveda chairs, for example, we have got 14 Ayurveda chair MOUs and only 2 are functional. 12 are still vacant, non-operational. So where the government is already like pushing so much, and so whatever has been achieved already, that should surely be activated. And we all, I believe this particular group today shares a very powerful voice, because we represent Ayurveda outside India.
and so suggestions surely cannot go unheard. And one thing very important happened, Pavanji. Maybe most of us were there when we attended a meeting by RAV's ATAB, Ayurveda Training Accreditation Board. That was a very powerful idea, and I believe they are still improvising and they are processing it, because Ayurveda Training Accreditation Board encompasses everything in Ayurveda outside India, which is unimaginably huge market and huge, in a way, industry. And those who are not BAMS or who are not controlled by or regulated by their own countries, they could be we have with us friends from all developed countries as well, from Europe and USA and Canada, also Australia. So if ATAB if that can be taken up more seriously and more methodically, then it would be empowering, entitling every Ayurveda practitioner outside India, and through one approach or the other, we could be having multi-tier kind of approvals. There could be level 1, level 2, level 3 kind of approvals given to them, provided they are, what study do they offer, because every country has got a different need, and we can see that almost every Ayurveda service provider or Ayurveda training provider outside India is having one's own program. They want to include any topic, they include, they want to delete, they delete, they want to, they decide the intensity. If they're including Dravya Guna, what do they mean by Dravya Guna? If they don't want to teach Vipaka, they don't teach Vipaka, So that is how we have to, that is a very, very powerful concept if ATAB can work upon that, because this ATAB document will form the foundation for more and more approvals. As Pavanji, you questioned in the beginning of this talk, how can Ayurveda be approved in more and more countries? Once we have an ATAB document, and it will be so so simple for most of the governments who want to follow. They will not have to reinvent the wheel. They will not have to process anything. They simply follow ATAB guidelines because it's Government of India document, and they simply say, okay, this is our standard. After a very brief discussion, they can just agree to ATAB document, and countless countries overnight can approve Ayurveda to certain level, depending upon what is your ATAB. They can start with what is the accreditation given to you by ATAB, what is your ATAB score, for example. Do you have a BMS doctor? You have a higher score. Do you teach ATAB syllabus? You have a higher score. You don't have an Ayurveda doctor, you don't teach ATAB curricula, then you have a low score. Accordingly, if we revisit that particular document, I believe then that can be a real nice beginning, and that surely will come much before the so-called approval per se or recognition per se, because ATAB document would be attending to those who are practicing Ayurveda today with whatever approval status those countries have. Pavanji, I believe I did not overshoot. Excellent, Ji. Definitely, we have to work hard to re-establish our Ayurvedic values in all over the world. Definitely, it should be there. It will be there. When dynamic persons, dynamic authorities like yourself are definitely doing great work in Mauritius, like that, definitely we will win the situation. Hum honge kamyab. This should be our version of the concept. Definitely. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Now I would like to request Professor Kamini Dhimanji. Kamini Dhimanji, welcome. Are we audible to you? Yes. Hi, Namaskar. Hari Om. Welcome.
गुड इवनिंग टू एवरीवन। पवन शर्मा जी नमस्कार, अग्निहोत्री जी बहुत बहुत नमस्कार आपको, मदन जी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर सर। ई शर्मा जी को मैंने पहली बार सुना, पहली बार देखा है, पहली बार मिली। गुड इवनिंग सर, आपको भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपसे जानने को मिली। दैट इज 80 AB सिलेबस यू आर रनिंग ओवर देयर, दैट इज गुड थिंग, and lot many latest official things I came to know from you. It is very nice. बाकी all the dignitaries present over here, सबको मेरा नमस्कार, happy new year, and the especially the work being going on by Dr. Pawan Sharma ji. I can say that patience and persistence, ये दो चीजें मैंने उनमें देखी है कि बिल्कुल पेशेंस के साथ और एकदम continuity में he is running over all the webinars. It is very nice work being run by him, unique thought to generate knowledge from one end of the earth to each and every place of the earth. That is the thing I have seen. बहुत शांति से, क्योंकि बहुत लोग क्या करते, थोड़ा सा काम किया लेकिन बहुत ज्यादा उसकी प्रोपोगेशन जो है, एनर्जी इज बीइंग एलोकेटेड for propagation only, but he is doing very silently his work. That is unique thing in Pawan Sharma ji. He is my senior and doing very good work to propagate the Ayurveda. And 365 days he is having seminars. We can say that in one webinar we have minimum 2 speakers and maximum sometimes 4, 5, 6 speakers. So we can see that how much knowledge he has generated for everyone, each and everyone. दूसरा एक मैं ये बात बोलूंगी कि मुझे नहीं पता कि एक कोने, दुनिया के एक कोने में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, और I cannot go to each and every place, but I can listen through these webinars कि हाँ वहाँ जो है इस पे काम हो रहा है, क्या काम हुआ है, what is his thought, what is his or her knowledge, and that is, we can say that generation of knowledge person to person is going on through this webinars is very nice. और दूसरा एक perspective ये भी है कि when we are in teaching or we are in a job, we cannot go to learn or study in the classroom. So this is indirectly we are learning from lot many new generation also. New generation is also having very good thoughts and good research activities they are going on in their places. By these webinars, we are also having, or we can say polishing of our knowledge by latest techniques, latest knowledge, what is being going on in each and every place. It is very nice पवन जी जो कर रहे हैं, और एक जोड़ी जो इस वेबिनार्स की, जो अग्निहोत्री जी एंड पवन जी दोनों हमेशा रहते हैं, बाकी कभी कोई रहता है कभी नहीं रहता है, लेकिन आई हैव सीन दैट ये जोड़ी हमेशा रहती है, और मेरी ये विश है कि जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और पूरा जो पवन जी ने बोला है कि वी आर गोइंग टू प्लान 400 वेबिनार्स इन दिस ईयर, सो आई विश बोथ ऑफ देम कि आपका जो सपना है कि 400 वेबिनार्स आप करें इस साल, वो पूरा हो, बहुत अच्छे से आपके वेबिनार्स चले, एंड ये पूरी जो ज्ञान की गंगा जो आप बहा रहे वो चलती रहे, और हम सब इसका लाभ लेते रहे इन वेबिनार्स के थ्रू। इट इज माय विश एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू। आप जुड़ते रहें, ऐसी मेरी कामना है। मैं हर महीने के पहले अपना प्लान आप लोगों को समर्पित करता हूं। मैं सभी से ये प्रार्थना दोबारा करना चाहता हूं कि आयुष का हर कंपोनेंट, हम लोग हर वेबिनार में मैक्सिमम 5 स्पीकर हों, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, सबके अपने स्पीकर एक एक हों, और नहीं हो तो मैक्सिमम 4 स्पीकर एक किसी भी स्ट्रीम के। मैं चाहता हूं आपसे, अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑडियंस, बिकॉज all of you have received our webinar plan for January. Thank you very much, and recommend us as the speakers for the day. Thank you. So now I would like to request Professor, President of Canadian College of Ayurveda, Dr. Harish Verma ji. Though he is not well, then also he has accepted our request. Thank you Harish ji. Swagatam. सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सभी आचार्यों को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, स्वागतम, शुभ नव वर्ष, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, सेम टू यू। आज थोड़ा फ्लू हो गया है, तो फिर भी मैं दो तीन पॉइंट रखना चाहूंगा। जैसे टॉपिक आज का आपने रखा है वासुदेव कुटुंबकम, तो
ये दोनों तरफ होना चाहिए। हम तो मानते हैं कि सारा विश्व हमारा परिवार है, विश्व वाले भी माने कि वो भी हमें परिवार माने। मैं इसलिए कहता हूं हमें तो उन्होंने हैवी मेटल्स के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। वेस्ट में हैवी मेटल्स आर्सेनिक, लेड, मरकरी वगैरह यूज नहीं कर सकते हैं, आप वो पेटेंट करवा रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, एक सेकेंड, मैं अभी वो एक स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, जिसमें आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को न्यूयॉर्क में एक एलोपैथिक डॉक्टर ने पेटेंट करवा लिया है फॉर ल्यूकेमिया, और उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि आर्सेनिक आयुर्वेदा में यूज होता रहा। तो ये वन साइडेड ट्रैफिक है, हम लोगों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, आप अपना पेटेंट करवा रहे हैं। एक सेकंड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहूंगा कि इसको हम हाईलाइट करें। ये देखिए, प्रोसेस पेटेंट फॉर प्रोड्यूसिंग आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड फॉर्मुलेशन एंड मेथड फॉर ट्रीटिंग कैंसर। तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड इन्होंने पेटेंट करवा लिया, और हमारा रेफरेंस सिर्फ आयुर्वेदा का एक रेफरेंस आया कि आयुर्वेदा में आर्सेनिक यूज होता रहा है। ये है हाल वेस्ट का। तो ये दोनों तरफ होना चाहिए। तो यही एक रीजन है कि आयुर्वेदिक लोग अपनी नॉलेज को प्रॉपरली शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये एक पॉइंट था। दूसरा, पवन जी, आपने जो पॉइंट रेज किया कि वेस्ट में आयुर्वेदा को रेगुलेट करवाने के लिए हमने एक मीटिंग की यहाँ पर ओंटारियो हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ। ओंटारियो में कोई 27 के करीब प्रोफेशन जो है वो रेगुलेटेड है। ये देखिए, ये ओंटारियो में चाइनीज मेडिसिन एक्यूपंक्चर रेगुलेटेड है, और यहाँ पर इवन होम्योपैथी रेगुलेटेड है, लेकिन आयुर्वेदा रेगुलेटेड नहीं है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए जब मैं गया वहां पर मिनिस्ट्री में, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आपको इंस्पेक्टर्स की जरूरत है, कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं, कि कोई गलत काम कर रहे हैं, कोई पब्लिक हेल्थ को हैजर्ड है आपसे, तो वो बताइए पहले क्या है। अब इसका सवाल, इसका आंसर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम रेगुलेशन की बात करते हैं, वो कह रहे हैं कि इफ आयुर्वेदा इज सच ए वंडरफुल साइंस, वेरी इफेक्टिव साइंस और कंज्यूमर फ्रेंडली है, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को कि हम आपके ऊपर इंस्पेक्टर बिठाएं। तो उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है, हाउ टू प्रेजेंट अवर केस इन द मिनिस्ट्री। क्योंकि अगर हम बताते हैं कि जी हमारी दवाइयों से इसमें हैवी मेटल होते हैं, इनसे किडनी डैमेज होती है, इससे ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो फिर ये सिस्टम बैन भी हो सकता है। तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है कि व्हाई शैल, उन्होंने मुझे कहा कि व्हाई शैल वी रेगुलेट योर प्रोफेशन इन ओंटारियो। इसका आंसर चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा इस पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि, और डॉक्टर ई शर्मा जी भी बता सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट भी शेयर करता हूं जिसमें ओंटारियो का क्राइटेरिया है कि प्रोफेशन को रेगुलेट करने का वो सबसे पहले रिस्क देखते हैं
कि इस प्रोफेशन में रिस्क क्या है, तो इस पे हम थोड़ा विचार करते हैं। आज हेल्थ ठीक होने की ना होने की वजह से आज इतना ही। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच जी। इसमें मैं मानता हूँ ATAV का जो कंसेप्ट है वो ईश शर्मा जी ने जो कम्युनिकेट किया, अनुपम से भी पहले बात होती थी, वो ATAV का कंसेप्ट एक्सीलेंट है। यदि वो रेगुलराइज कर दे तो आपकी ओंटेरियो को हो या USA को हो, दे विल रिकॉग्नाइज दैट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। ईश शर्मा जी, आपका क्या विचार है हरीश जी के? नहीं, थैंक यू वेरी मच हरीश जी फॉर शेयरिंग सच एन इम्पोर्टेंट लीड। जो आपने बताया कि ल्यूकीमिया के लिए उन्होंने आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को पेटेंट करवा लिया, ये तो क्या बोले इसको, दिस इज रियली नॉट वेरी वेलकमिंग एंड ये हमारी हार है। आप ये बोलिए ना, डकैती हमारे प्रॉपर्टी पे डकैती है। पूरी सज्जनता, विनम्रता और दुख के साथ कहिए, ये हमारी हार हो गई। हाँ जी, ये बिल्कुल। और बहुत मतलब GMP क्वालिटी पर प्रोफेसर पवन जी इसको ध्यान देंगे। अपनी पीछे मीटिंग हुई थी क्वालिटी कंट्रोल पर, उस दिन हमारे जो एडवोकेट हैं और डॉक्टर हैं, वो उनकी सलाह चाहिए हमको यहाँ पर कि हमारी अपनी चीज, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने पूरी रूलिंग दिखाई थी कि व्हाई शुड देयर बी एन इंस्पेक्टर ओवर आवर ड्रग्स व्हिच आर वंडरफुल एंड थॉरोजेंटल। तो ये सच में हमारी विदेश में हार हुई है और हम आयुर्वेद के लिए जी जान से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। ये पॉलिसी नहीं है। यस प्लीज, यस प्लीज। रियली और ये बहुत दुखद है कि जिस पिच पर हमें वो ब्लेम करते रहे कि आप तो हैवी मेटल वो CALM और आप तो किडनी खराब कर देते हैं, उसी चीज को वो उनकी ही फ्रेटर्निटी अपना पेटेंट करवा रही है, जनसेवा में यूज नहीं कर रही है, उसको कमर्शियली पेटेंट करवा रही है। तो उनका वो जो एक मीन मेंटेलिटी है वो बहुत ही स्पष्ट है। और ये बिकॉज जैसा हरीश जी ने हर बार ये मुद्दा बहुत ही रेलेवेंटली उठाया कि हाउ कैन आयुर्वेदा बी रिकॉग्नाइज्ड in Canada particularly and everywhere in general. So surely I believe this is a political will and which is showing up because more and more countries are taken into leap, and now a new Ayurveda chair has been declared for Australia, Sydney as well. GCTM has come up, and GCTM is like a very powerful political victory for India. And through GCTM, and before that GCTM would take like another couple of years to come up, उसमें 2 साल लगेंगे। तो तब तक जो पॉलिटिकल विल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है, उसी को अगर if that the streak is extended and more countries are like taken into discussion, then I believe one by one everyone would fall in line, because Ayurveda is not because we are from Ayurveda. We all have studied Western medicine, we all have studied Ayurveda. We are of this fair opinion that Ayurveda is the future of medicine. Agar itni tarakki, itne development ke saath mein by the Western medicine, everything would have been improving. Like they could have eradicated diabetes, they could have eradicated cancers and arthritis and whatnot. Then we might not be requiring Ayurveda or yoga or anything. Because unfortunately, as the Western science is progressing, the quality of life is coming down. The conditions we used to have in earlier generations when we were 60, 70, 80 years old, now those cancers and heart attacks now we are having when we are 30. The quality of life has taken a serious downhill trend, very much in proportion with the so-called development in the Western medicine, because their development is not like homogeneous, it is not inclusive, it is not selfless, it is not a selfless development. So that is where Ayurveda is the future of healthcare system, and the whole world would be, the whole world has to be on this page sooner or later, Pavanji. ATBA is surely the most powerful beginning, I believe. Thank you, Ish. We have taken one oath to recognize, to support, to recognize, because recognition is the matter of government, local governments. So we will support recognition of Ayurveda in maximum countries. Please help us by communicating their speakers, board. So we will try to involve every authority of Ayurveda, AYUSH or health ministry there locally. Thank you very much.
And now I would like to request Dr. Shekhar Annam Bhotla. Welcome, Dr. Shekhar, my dear friend. And where I have disturbed him in sleep because it is also USA time. Welcome, Dr. Shekhar. Kindly unmute yourself. Thank you, Pawanji. Hari Om, good morning. Happy Hari New Om. Year, Happy New Year. Happy New Year to all of you, all the Happy distinguished delegates and scholars and experts in the field of Ayurveda. And we are very, very fortunate to have such a wonderful line of speakers for this Independent Research Ethics Society, for AYUSH SAMRIDDHI. So, the globalization of Ayurveda, it is not a new thing. It is a worldwide, since millennia, it's spreading the knowledge. People who are in the history of Ayurveda, if you look into that, Galen, Aristotle, Socrates, and all the various people, scholars, and Hippocrates, these are the people who are traveled to India and taken the knowledge to the various parts of the world. Even if you see some of the principles of Ayurveda are still practicing. Only the problem is coming is the evidence-based. What our Prime Minister Modi ji also explains that evidence-based Ayurveda, more lifestyle medicine. Now in the America, there is one society has developed medical doctors as considered as an American lifestyle medicine school or colleges. Lifestyle medicine. So waking up in the morning, Brahmya Muhurte Uttishta is clearly mentioned in Ayurveda. But what changes are happening in our physiology? Cortisol levels and various levels of the body, biochemically, what changes are happening? We can talk about that. Vata is very balanced way, and Tridoshas will be balanced, and Ojas will be strong during the Brahmi Muhurta time. Where is the evidence? Where is the proof? We have slokas are there, we have evidence, these things. What changes are happening? That is the reason we need to have simply not following the principles of only Ayurveda. Ayurveda principles are there, but the thing is we need to prove them through evidence. So what changes are happening in our physiology from the morning, daily routine. So if you look into that also, there are some dietary issues. Ayurveda portion. If you look into the Kadalyena Takram Nabundita, and night time we should not eat yogurt, and honey and ghee should not be mixed together, equal portions. These are the simple things where the dietetics associations, dietetics combinations like that, and what changes are happening. We can explain in terms of a Ayurvedic perspective like that. How many Ayurvedic people can understand Ayurvedic principles? People can understand doshas and dhatus and malas, agni and everything. But the society is changing. Even the lifestyle changes are happening. Now, modern society has created such a way that havoc, basically, the good daily routine lost, lifestyle changes are taken place, and at the same time, the psychological stress is another factor, major factor for creating these problems. So psychological trauma in the Western countries, as we see, of course, it's not only we are blaming the Western countries, even in India also. And we have some psychological problems are there, but they are not open. And that doesn't mean that people who are having divorces are not happening in India. That means all are happy families like that. It's not like that, because they have an understanding, mutual understandings are problems are there. So these issues are there, which we have to address it from the level of education, through the education, proper education and understanding, and backed up with scientific data is very, very important for the things. Our Ayurvedic community
has to awaken and doing that, how we can implement our principles of Ayurveda and more and more herb research and Ayurvedic medicinal plants research is required. Even we have a strong, potent anti-cholesterol medications. Is there? We talk about that Triphala Gugulu and various Gugulu preparations are there. Is there any how much evidence shown up like that? We have to show more and more clinical studies are required. And it's a common factors like that, how it can be effective for the people like that. And what type of diet is there, what type of lifestyle has to be taken, and how the medication has to be given like that. This is the way a evidence-based, a clinical, multi-center clinical studies has to be done, and then it's proven. Like CCRS has published so many articles on the various research articles. Is it available for the public as much as possible? And how much data is there? How much data is there? That data has to be not like okay, we have done 2,000 cases. The population is the worldwide population is 7.5 billion population. In that, we see the only 2,000 cases or 5,000 cases like that. So this is not sufficient data. Sample is not sufficient. We need to bring more and more data. More transparent data is there. If medicine is not working, it clearly mentioned that yes, this is not working. This is not working, and it is not showing. Further investigations can be required. More database, more samples are required. This is the thing. Honesty, integrity, and everything is required in the field of Ayurveda to bring the more awareness to the public and everything. So this is the common question people, they look into that. How every level, Shirodhara, for example, simple Shirodhara, what are the changes are happening in the Shirodhara? There's no, if you look into that, only old data we are showing up like that. But how many people are doing Shirodhara in the worldwide? How many practitioners are practicing? I myself, I have done more than 10,000 Shirodharas. But where is the evidence? Where is the proof? Where is the thing? What changes are happening? And how we can show it like that? This is the data is required. Some data is collected data is required. Then only we can show the more globalization of Ayurveda can come. So it's not only that, it's a global center. Now it is glad that a global center has happened in the traditional medicine in Jamnagar, Gujarat. So where they can bring all the collected data together and open access, availability of the data is available. That way, every practitioner in the worldwide able to refer that website and look into that. They can download the information, what the data is available. Each and every plant, how it is effective like that. So that can be done. So another factor is that what we needed to do, we need to have global farms. Recently, we attended the World Ayurveda Congress. How much input, output came, how this data is transferred and put it into the open access. Not like only attendees are receiving that information like that, and it is open access. It is also required. Even you try to attend some of the lectures, you are not able to attend all the lectures because there is so many panels, so many tracks are there, and where you cannot focus on attending of the 4-day conferences like that. So this is the thing is very important that open access, open information is available that can be downloadable for anybody, and it will be more useful. For that, we need to have funding. It's not like only one thing is that it's available. We need to charge for that. This things because bigger organizations, the World Ayurveda Congress type of things, which Government of India, Ayush Ministry, these things can be open the information to public and health professionals. They can get more and more connectivity of the knowledge and everything. They can provide this knowledge to the public. One is the public level, one is the health professional level. So one health professional level, how it is provided that information to the in a large scale. That is also very, very important. These things. Then only our global scenario will be fulfilled. And it's a good thing that we are progressing. I'm not saying no doubt. We are progressing. Awareness is coming, and awareness in the not only in United States, worldwide it's happening. More and more research. A lot of people think about that. Okay, we wanted to come to America and do the research in America.
Ayurvedic herbal formulations. No, it's not possible like that way, because you need to have a lot of funding is required, where the government of India can do a lot of research work there. And that research work, it's done how the Western countries, what way they are doing, how they are analyzing these things. If you look into the Rasaushadhas and everything, nanoparticle, nanotechnology has developed, where we have a standards are there, Ayurvedic standards are there, comparing with the Ayurvedic standards, with the modern standards, how the analysis can be done and documented. So more than 20 years back, people still scared of giving of some Rasaushadhis, because there is no study was done. For example, if a simple thing is that Tamra Basma you are given to somebody, or Kajali preparations you are given to me, Rasamani Keras you have given to me, given to the patients, and what changes are happening over a period of time, and is there any profiles of the lab work, blood work, everything is done, and mainly they are targeting of the liver and kidneys and these areas, blood levels of lead, mercury, and arsenic and cadmium, all the heavy metal contents are there. This is the thing, scary part like that, how Ayurvedic medicines becomes poisonous like that. So medicinal plants, there are some vishas are there, visha drugs are there, that also to be purified form. So recently I'm treating a patient with Parkinson's. He's a medical doctor, he's treating with Parkinson's. So how, if you look into that, Kapikachu is he's the dopamine levels and everything. Kapikachu is equivalent to these things. He asked me a question, simple question, that L-Dopa they are giving in the medication form in the carbidopa, combination with carbidopa and L-Dopa. Carbidopa is not available in the market, in the natural source. So they have to, chemically they have to. L-Dopa and carbidopa, they combine together, they can work together and in the Parkinson's condition. So now we have Kapikachu is clearly mentioned that somewhat Kampavata disorders like that. Kampavata, again, so many varieties are there, rigidity forms and everything like that, so many varieties. But look into that, how this Kapikachu, what dose we have to give, what dose we have to fix this person, and what medication we have to go. So may there be 2 grams, 10 grams, what is the long-term dose? How long we have to give? And this is the things also. But when I explain to this medical doctor, it's not only Ayurveda only giving on Kapikachu only one thing. There's a scenario of so many things. Panchakarma therapies are there, involved there. Panchakarma therapies also transform the body for the produce the dopamine levels and everything. And now more and more studies are showing that even the gut and brain barrier, if you look into that, their neurological conditions can be treated. Neurology department is talking about the gut. So, but in Ayurveda, thousands of years back mentioned, stomach is one of the culprit of creating all the disease. So, ama is the culprit of creating all the disease. Amena tena samprukta dosha doshasya murchita. So, simple principle is there. So, where the ama is produced in the stomach, which is circulating all over the body, creating all the diseases. So, we look into that way, and how this ama substance, which is can be there. And if you collect the ama, and what is the analysis, what we are seeing analysis like that, what type of ama is there. So all the different things, the principles, Ayurvedic principles has to be evaluated, more research has to be done, then will be very, very global acceptance will start to come. So that's the thing. Thank you very much for joining with us. Namaste. Thank you, Dr. Shekhar. I would like to communicate, as World Ayurveda Congress also communicated, and NCISM Principal Conclave was also communicated that AYUSH research portal, one research portal they have developed by Government of India. And in my opinion, excellent. You have communicated very excellent concept that evidence should be there. Unfortunately, meta-analysis of evidences should be done, which is not there. Because every institute is working. Every year, five students for MD. They are doing researches, maybe paper researches, maybe some percentage of here and there, but they have the data. But that data should be summarized, should be concluded, and then it can be presented to the world
that just see, we are not conducting clinical researches on only 2,000, 3,000. Our every hospital is conducting researches on minimum 2,000, 3,000 patients per year, and that multiplies to thousands of the units, including CCRAS, including everything, I mean to say. But that co-relating, coordinating, and one focal point agency is essentially needed, which can take the research data from these institutes, compile them, and meta-analysis of those data should be presented to the world. So we will be able to recognize that definitely, because Jandopa is the premium product of Jandu also, where only single ingredient Kapikachu is there. But there also, the questions are there that how that acts and how L-dopa, where the carbidopa is not added there. So quantity is much more than the convenient dose of the medicine in there. So that was the question there. Thank you, Shekharji. Thank you very much. Now we have respected. Can I add something, sir? If you allow me for a minute? Yes, definitely. Welcome. Very nice talk, Dr. Shekhar. And as we were discussing about the research, maybe Pawanji, now because you have become such a powerful platform, I would request you for something new. Now the official letters from IRES should go to the Ministry of Ayush as suggestions, like as a crux, as the minutes of the meeting of what we are talking, because we all come from certain places. We are not random people just talking like that. We are not like friends talking. We are like professionals of certain standard. My very important idea which came to me, and I have been discussing, like pitching it, presenting it for last 10 years, but really could not be heard. Maybe through you, this can be paid attention to by the Ministry of Ayush. As you are telling, like every institute is seeing 2,000 to 3,000 patients, especially for the post-graduation studies, genuine or non-genuine, whatever. Now, very important problem which we all know is every scholar, every MD scholar has to start a study, normally like 6 months to 1 year after his or her enrollment in the post-graduation, and has to wind it up within like next 2 years. This is submitted. Good, bad, very good, clapping, and So my suggestion was, for example, like BHU or NI or any post-graduation institute, Kaya Chikitsa department has got 10 seats or 5 seats, for example. Now, at least 50% topics should be decided by the government of India and should be communicated to Jamnagar BHU or Tibia or NIA or, whatever government institutes. Okay, 50% of your students have to continue. One student would be taking up one particular topic, like, for example, like a herbal preparation against diabetic retinopathy. So he would be doing A, B, C, D. Next student would not be doing again A, B, C, D for 20 years what we are doing. The next student would start from E, F, G, H. Then only we would reach up to Z. Everyone wants to do my bit. I want my degree. I would do A, B, C, D, copy paste. I get my degree. Everyone is happy. The research doesn't progress. Yes, sir. Agnihotri ji, आप mute हैं? सर ऐसा नहीं है, बल्कि ऑन कॉन्ट्रेरी से डिफरेंट है. मान लीजिए मेरे यहाँ द्रविड़ में या काय चिकित्सा में 5 लड़के काम कर रहे हैं और उन्होंने ओबेसिटी पे वर्क किया है मेदो गुलू से या त्रिफला गुलू से, तो अगर नेक्स्ट लड़का उस डिपार्टमेंट में आता है, अपने रजिस्टर कराता है, तो सीए से उससे कह दिया जाता है इस पे काम हो चुका है, आप कोई नए इंग्रेडिएंट की नई प्रिपरेशन लीजिए ट्रायल पर या कोई और टॉपिक लीजिए. आप जो कह रहे हैं उससे डिफरेंट है. अगर ऐसा हो तो काम ही नहीं आगे बढ़ेगा. ये ऐसा नहीं है प्लीज. ऐसा सर मैं क्या बोलना चाहूंगा, और आपने बढ़िया बात बताई जी. हाँ जी, देखिए सर, ये तो फैक्ट है कि जिसपे काम हो चुका वो तो हमारा सारा जो रिसर्च पोर्टल पर है, और आप सेम टॉपिक नहीं ले सकते. अब अगर आप है ना सेम टॉपिक, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक जो जनरल टॉपिक है, मान लीजिए आप डायबिटीज पर काम करना चाहते हैं, तो उससे जहां तक काम हुआ है उस काम को आगे बढ़ाना है. सेम टॉपिक को मतलब रिपीट, वो एक कंट्रोल्ड रिपीट है.
क्योंकि वो एग्जैक्टली रिपीट नहीं है, वो ABCD नहीं है। वो जब गवर्नमेंट से मैंडेटेड होगा तो अगला व्यक्ति उसको ABCD तक की इंफॉर्मेशन उसकी मान ली जाएगी, भी तुम्हारा ये काम हो चुका है, तुम EFGH पर काम करो, इसी लेवल में आगे जाइए। तो वो अगर गवर्नमेंट से टॉपिक्स अगर फिल्टर होके कमेटी के द्वारा आयुष मिनिस्ट्री से आ जाए, ज्यादा नहीं 20%, 50% हर इंस्टीट्यूट के लिए, तो बाकी HOD को तो पावर होती है कि वो क्या करना चाहेगा। कामिनी मैम कुछ कहना चाहेंगे? Sir, at the Yes, same ma'am. time, government is also supposed to finance that project, because we have got a limited budget as far as the research work is concerned, and the work total is only 18 months. Within 18 months, one has to deposit and wind up the thesis, and next 6 months will be evaluation and then written and viva. So if the suggestions and topic are suggested from the government side, yes. Yeah, so I also would like to say two things. That first thing is that PG thesis is a part of training of research. First, students are coming to learn only how to do research. And secondly, sir has told that we are having limited budget for PG scholars. Same thing, 20,000, 25, 30,000, not more than that. So in this money, we cannot do exceptional research. We can say that हम इतना बड़ा काम करेंगे, ऐसा नहीं होता. This is the part of training to PG scholars only. After completing PG, when they are coming to PhD, at the time also we are giving them topics. And to give topic is the work of, I think, guide. गाइड जो है उसने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है कि मुझे इस डायबिटीज जैसे आपने बोला उस पे काम कराना है, तो वो आगे से आगे प्रोग्रेसिव काम ही देते हैं. एक स्टूडेंट को काम दिया, उससे अगला जो आपको नेक्स्ट देना है वो दूसरे स्टूडेंट से करवाते हैं. तो इन दिस वे वर्क इज गोइंग ऑन इन कंटिन्यूएशन. एंड देन व्हेन आपने जो बोला कि टॉपिक शुड बी डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, सो वो टॉपिक्स डिसाइडेड हुआ है ऑलरेडी बाय गवर्नमेंट to allocate the research projects. आप आयुष की वेबसाइट पे जाइए, आरवी की वेबसाइट पे जाइए, उस पे जाइए, उसमें उन्होंने टॉपिक्स डिसाइड किया है कि इस काय चिकित्सा में या स्त्री प्रसूति में हमें इन टॉपिक्स पे आप प्रोजेक्ट दीजिए, तो हम आपको प्रोजेक्ट देंगे. तो हम जब प्रोजेक्ट अप्लाई करते हैं तो वहां जो टॉपिक दिए हैं उसी के ऊपर प्रोजेक्ट दिया जाता है मिनिस्ट्री की तरफ से. तो वो वर्क ऑलरेडी गवर्नमेंट ने किया हुआ है. एंड इन दैट वी आर हैविंग बजट मोर देन दैट. जैसे स्टूडेंट को दिया जाता है 25-30 हजार, लेकिन इस प्रोजेक्ट में वहां पर उन्होंने एलोकेट किया है हर एक सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट बजट, से 8 lakhs 10 lakhs फॉर दिस एंड दिस टॉपिक्स. सो दैट इज ऑलरेडी डन बाय गवर्नमेंट. Great information, madam. Definitely it will be beneficial to all audience that we have started. My request was also like this new concept of clinical research by government of India, that if professors or guides are working in different university, different states, why can't they do continuous simultaneous research on one topic to generate the data from diversity? Because the question from Dr. Shekhar was very means powerful, that on 2000 cases, if we are conducting clinical study, it will not represent the data of diversity in global perspective. So definitely we have to think the professors or guides of the PhD thesis should work in coordination, in tune with each and every person. And maybe 1 year diabetes, every professor will give same formula, same protocol, same everything, same medicine to each and every diversity, as Drug Controller General of India is now instructing to coordinate, conduct the trial in various locations of the India. So if it will be done, then definitely it can be in tuning and greater data can be generated for global presentation. It is my opinion. This is untuned. This is absolutely on the wish of guide, but that should be in nation and nation's benefit. It should be coordinated well. And suppose one person on diabetes, this 2023 sessions, PG or PhD, whatever is suitable. So we will decide, it means government can decide or dictate that please conduct these topics for PhD scholars or PG scholars for extensive research.
or new project like this. So definitely Ministry of AYUSH has done wonderful initiatives for this. AYUSH research portal is also there. CTRI AYUSH is there. Now DGCI is approving ethics committees also. So everything is on the right track. So for So- that, for this purpose, multi-centric studies are being going on. Yes, madam. Yes. So Multi-centric studies. private yes. colleges should also be involved, madam, because they are also more in number in comparison to the government. So, So for private that, colleges should also be involved. For that, you have to apply for the project. That is the thing. I know, madam. I know. So now I would like to request, we are fortunate to have Dr. Chandra Bhushan Jhaji, our legendary Rasashastri. Welcome, sir. Adani Chandra Bhushan Jhaji. नमस्कार और सभी लोगों को नए वर्ष की मंगल कामना। आशीर्वाद दीजिए सर। वास्तव में बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय आज हम लोगों की चर्चा में है। वास्तव में काम आयुर्वेद के क्षेत्र में खूब हुआ है। हम लोग भी 40 साल तक जुटे रहे, करते रहे। उसमें बेसिक रिसर्च से लेकर के और क्लिनिकल रिसर्च तक काफी काम हुआ है। बहुत सारे काम तो डिपार्टमेंट की अलमीरों में बंद पड़े हुए। बहुत सारी चीजें बहुत सामान्य जर्नल में पब्लिश हो पाई, क्योंकि एक जो इस समय कंडीशन बना दिया गया कि थीसिस सबमिट होने से पहले इतने पब्लिकेशन होने चाहिए, तो सामान्य जर्नल लोग ढूंढते हैं कि किसमें जल्दी से पब्लिश हो जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो काम इतना हुआ है, और जो सारी बातें हम आज अभी चर्चा कर रहे हैं, हर तरह का काम हुआ है। इन सब को जरूरत है वही कंपाइल करने की, और कंपाइल करने के बाद उसकी प्रॉपर एनालिसिस हो, और एनालिसिस हो करके और फिर उसको लाइट में लाया जाए, प्रोपोगेट किया जाए। आज चीजें प्रोपोगेट नहीं हो पा रही हैं साइंटिफिक कह करके कि भाई अनसाइंटिफिक है या पूरा वैलिडेटेड नहीं है, और इससे हमारी मतलब जो भारत की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसमें आयुर्वेद भी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो एक भारत इसमें पिछड़ रहा है, चाहे नोबेल प्राइज से लेकर के और किसी और छोटे क्या कहते हैं जो कुछ भी। तो प्रोपोगेशन प्रॉपर हमारी चीजों का होना चाहिए, और प्रोपोगेशन के पहले की जो कुछ तैयारी है उसमें बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, और बाकी आगे भी मतलब ये सतत की प्रक्रिया है, बराबर हो रही। तो सबसे मैं कहूंगा कि ईमानदारी पूर्वक और हम इन सारी चीजों को इकट्ठा करें, इकट्ठा करके और लाइट में लावें। आयुर्वेद का बहुत बड़ा कल्याण इससे होगा। बाकी काम जैसा कि बताया गया कि हर जितने जहां इस समय पीजी हो रहा है, हर जगह कुछ न कुछ रिसर्च के काम हो रहे हैं। तो जरूरत बस सबको सही तरह से इकट्ठा करने की है, कंपाइल करने की है और एनालाइज करने की है, उसको लाइट में लाने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पवन जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद के लिए। मैं आदरणीय अग्निहोत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो आज नए साल का दिन है, बड़ा अच्छा होगा कि सभी लोग वो 2-2 मिनट 5-5 मिनट शुभकामनाएं यदि दें तो बहुत ही। वसुधैव कुटुंबकम बड़ा कॉमन सब्जेक्ट है, लेकिन विशेष सब्जेक्ट है जो हमारे दिलों पे राज करता है कि हाँ, ये बोलने से नहीं होगा, हमें मानना होगा कि हम दूसरे को अपना मानते हैं। जैसे वो श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ IOU, मैं आप पे अधिकार रखता हूँ, IOU। तो वो यही वसुधैव कुटुंबकम की मूल भावना है कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, इनमें कहीं भी मतभेद नहीं हो सबसे पहले, और पांचों जैसे कमांडो मिलके अटैक करते हैं, ऐसे हम अटैक करें सभी पे। ग्लोबलाइजेशन के लिए, रिकॉग्नाइजेशन के लिए यही वसुधैव कुटुंबकम है। आदरणीय अग्निहोत्री जी, मैं ओपन सेशन है, के पांडे जी भी अपने साथ हैं, निशांत शुक्ला जी भी हैं। अब मैं आपके हाथ में बागडोर सौंपता हूं, आदरणीय प्रोफेसर VK अग्निहोत्री। नमस्कार सर, प्रोफेसर पवन शर्मा जी। आपके इस उत्तर
गुरुतापूर्ण दायित्व देने के लिए नववर्ष बहुत बहुत आपका आभार। चर्चा अच्छी चल रही है और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमको हमारे वैद्य जी, गुरुवर प्रोफेसर सी झा साहब के भी आशीर्वचन मिले काफी लंबे उसके बाद, तो नए साल में फिर से। और इसी क्रम में एक चीज हम चाहेंगे, हमारे साथ हमारे डॉक्टर निशांत त्रिपाठी जी हैं जो होम्योपैथी से जुड़ते हैं, तो होम्योपैथी की चर्चा नहीं हुई है। होम्योपैथी तो वैसे ही विदेश से, जर्मन से आई है, तो हम सोचते हैं कि होम्योपैथी वसुधैव कुटुंबकम के भाव को कैसे प्रकट करती है, इसलिए सबसे पहले आज के इस ग्रुप डिस्कशन की शुरुआत में उनके अतिथि व्याख्यान के एक अंश के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर निशांत त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं और उनके होम्योपैथी के दृष्टिकोण से कुछ चर्चा शुरू करें, फिर हम सबका बहुमूल्य समय अपने वेबिनार के लिए निश्चित रूप से आमंत्रित करूँ। डॉक्टर निशांत त्रिपाठी जी, आप उपलब्ध हैं? निशांत जी, जब तक निशांत जी जुड़ते हैं, और मुझे पता नहीं सब लोग कब तक रहेंगे, तो मैं थोड़ा उम्र के हिसाब से सबसे पहले वैद्य राजन पटंगर जी के आशीर्वचन ले लेता हूं, जिससे कि फिर हमारी गाड़ी फिर अपनी स्पीड पे आ जाएगी। और निशांत शुक्ला जी सामने मौजूद हैं, प्रोफेसर पी सुधाकर रेड्डी जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर के पांडे जी हमारे साथ बिल्कुल शुरू से बने हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं वैद्य राजन पटंगर जी से, और अगर निशांत त्रिपाठी जी इस बीच अगर आ जाते हैं तो उनके वचन हमारे पास उधार रहेंगे, जैसे ही वो आते हैं उनका जरूर लेंगे। तो वैद्य राजन पटंकर जी, आप शुरुआत करिए मुंबई से। नहीं, अरे मैं आशीर्वचन कहने के लिए इतना बड़ा नहीं हूँ। हैं आप, तो हम लोग जानते हैं, व्यक्ति अपने आप नहीं जानता, आप शुरू करिए जी। नहीं, कैसा है कि सबको हार्दिक और आरोग्यदायी शुभकामनाएं नए वर्ष के लिए। और आज के विषय के बारे में अगर कहूंगा तो कुटुंब बनाने के लिए आप जैसे या पवन जी के जैसे लीडर और मदन जी के जैसे और शेखर जी के जैसे, ईश जी के जैसे, उनकी बहुत जरूरत है। तो मेरा इतना ही कहना है कि हम लोगों को अगर कुटुंब इकट्ठा करना है पूरे दुनिया का, तो उसमें ना सिर्फ आयुर्वेद पर सिस्टम ऑफ आयुष के बारे में पब्लिक अवेयरनेस, ये मेरे ख्याल से ज़्यादा जरूरी है। और उसमें भी जो ऑथेंटिसिटी है वो लोगों के सामने अगर रखी जाए तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा एक मेरा मानना है। और जो रिसर्च के बारे में जो कहा जा रहा है आजकल, स्पेशली महाराष्ट्र में भी ऐसा मैं देख रहा हूँ, ज़्यादा जगहों पे ज़्यादा घुमा नहीं हूँ, पर फिर भी महाराष्ट्र में ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत बार रिसर्च हो रहा है, रिसर्च नहीं होता है। तो उसके लिए अगर देखा जाए तो इन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है उसके लिए, पर वो कोई या तो चूज नहीं करता है या उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, ये पहली बात है। और जो भी सब्जेक्ट लेकर के उसके ऊपर एमडी या पीएचडी किया जाता है तो उसकी प्रैक्टिस करना ये भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, ऐसा एक मेरा मानना है। कि जो कुछ सब्जेक्ट लेकर के करते हैं, और ऐसे बहुत ही गिने चुने ये मिलते हैं कि जो ये किया है उनकी प्रैक्टिस वो लोग करते हैं। महाराष्ट्र में ऐसे 2-4 उदाहरण है। एक हेमंत बाविस्कर की जो जलगांव से है, उन्होंने नेत्र के बारे में सिर्फ वो प्रैक्टिस कर रहा है उसी में एमडी करने के बाद, और उसने बाद में एमएस भी किया उसमें, और वो एक्चुअल सर्जिकल वर्क वगैरह भी बहुत सारा करते हैं बाद में। और एक जो एग्जाम्पल है कि मंगेश देशपांडे की, जिन्होंने अस्थि के ऊपर एमडी किया, और वो सिर्फ ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियो इसका ही काम करता है, और उसके ने जो क्लिनिक खोला है, एक हॉस्पिटल है ऑर्थोवेद करके, वहाँ पे सिर्फ ऑर्थोपेडिक ही काम होता है। तो ऐसी भी चीजें मेरे ख्याल से जरूरी है। आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल ऐसा करके रसशास्त्र है या संहिता है वो बाजू में रखा जाता है। तो मेरे ख्याल से वो भी एक बेस है, क्योंकि अगर रसशास्त्र सही तरीके से नहीं सिखाया जाए या नहीं ये किया जाए तो आगे की जो चेन है वो कैसे प्रस्थापित हो जाएगी, ये भी एक मेरा क्वेश्चन मार्क है। तो हमारे कॉलेज में आजकल ऐसा हो रहा है कि जिन्होंने रसशास्त्र भी लिया है उनको भी एक दिन ओपीडी में बैठना रहता है जी, क्योंकि उनका जो अप्रोच है वो भी सब लोगों के सामने आना चाहिए। और जो रिसर्च होता है उसके ऊपर भी इस तरीके से अगर काम हुआ
कि चिकित्सा के लिए उसके कितने बेनिफिट्स है, गायनेक में कितने बेनिफिट्स है, शल्य चालक में कितने बेनिफिट्स है, तो वो भी उतने ही जरूरी है। और उसी के साथ में संहिता के में भी जो एमडी कर रहे हैं उनको भी एक दिन ओपीडी के लिए दिया जाता है। तो ऐसा अगर हो जाए तो कलेक्टिव वर्क और ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हम लोग आयुर्वेद ही नहीं पूरे आयुष को पूरे दुनिया के सामने अच्छी तरह से रख पाएंगे। यही मेरा कहना है। फिर एक बार सबको आरोग्यदायक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य राजेंद्र पडंकर जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। और जो अभी आप चर्चा कर रहे थे वो तो हमारे NCISM का ही निर्देश है कि सभी क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल सभी विषयों के ओपीडी के दिन है। स्वास्थ्य का भी अपने स्वास्थ्य उन्नयन के लिए है, वो तो व्यवस्था है। अभी आपने जो नेत्र रोगों वाले डॉक्टर साहब चर्चा की कि वो सर्जरी भी करते हैं, मुझे याद आ रहा है शायद वो तो नहीं है जो देवगुण से MD है और उसका उन्होंने सर्जिकल का वर्क किया। वो कौन है हमारे डॉक्टर भोंसले सर हैं, कौन है हम याद नहीं आ रहा। वो ये हेमंत भाविस्कर है। अच्छा, हेमंत भास्कर। हाँ, वो भी जलगांव में। बहुत अच्छा दिया था और नेत्रों पर पढ़ते हैं इसका तर्पण वगैरह। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आज की शुभकामनाओं के लिए। अभी जब हम हमारे अतिथि वक्ता लोग अपनी चर्चा कर रहे थे, विशेष रूप से जैसे हमारे प्रोफेसर ई शर्मा जी कर रहे थे, तो उस समय ही मेरे दिमाग में बात आई कि वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज में औषधियों की कमी नहीं है, अपना उपचार कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के ऊपर उनका वर्क चल रहा है, जैसे कि प्रसन्नात्मेंदी की स्थिति बने। और उन्होंने उदाहरण दिया कि अक्सर कम उम्र के बच्चे लोग भी वहां पर डायबिटीज वगैरह हो रहे हैं। इंडिया में भी यही हाल है। और मेरे सरप्राइज अभी ये हुआ, परसों चौथे दिन की बात है, मेरे अपने प्राइवेट कॉलेज में हम वहां पर ऑब्जर्व गए थे। एक लड़का फाइनल ईयर में BMS में था और वो बहुत ही थोड़ा एजेड लग रहा था, जैसे 26 साल से ऊपर तो नहीं होगा, ग्रेजुएशन का था वो। उस बेचारे को हार्ट अटैक आया और मई में उसकी बाईपास सर्जरी हो गई है और इसलिए उसने हमसे अलग से एक थोड़ा बेंच वाली सीट मांगी कि वो कंफर्टेबली लिख सके। तो मुझे सुन के बड़ा धक्का रहा कि भाई इतनी कम उम्र में बाईपास की हो गई ऑलमोस्ट। तो ये जो ईश साहब जो कह रहे थे वास्तविकता है कि बहुत तेजी से चीजें बदल रही हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। और इसके लिए हमारा आयुर्वेद का ग्लोबलाइजेशन बहुत जरूरी है, जो कि हमारे जीवित रहने की, जीवन यापन की कला बताता है। मैं समय को न खराब करते हुए चाहेंगे कि हमारे आज के जितने भी हमारे आज रेस्पेक्टेड हमारे जो प्लेटफॉर्म में आज सुशोभित हो रहे हैं, वो सब हमको अपने आशीर्वचन दें और आज के दिन को बड़ा बनाएं। लेकिन समय की मर्यादा रखें कि सबको ही मौका मिल जाए। मेरे संग प्रोफेसर रामदास जी जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर निशांत जी से हम फिर से शुरू करते हैं, जब तक और लोगों को हम इनवाइट कर लेते हैं। डॉक्टर सुनीता पांडे जी भी मौजूद हैं और एक करके लेते हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर निशांत शुक्ला जी, आप अपने गुजरात से हम लोगों को अपने आज के लिए, आज के टॉपिक पर और आज के नव दिवस पर शुभकामनाएं देने का वक्त करिए। आपका स्वागत। सबसे पहले अग्निहोत्री जी आपको वंदन, पवन शर्मा जी आपको वंदन। ईश्वर आपको ये जो प्रेरणा दे रहे हैं, ये प्रेरणा का स्रोत आप पर हमेशा जो है वो बरसता रहे, यही परम कृपालु परमात्मा से मेरी विनती है। ये एक काफी अच्छा कार्यक्रम है और जो 1000 तक पहुंचाने की बात पवन शर्मा जी ने की है, ये टास्क जो उन्होंने किया है, ये सबसे बड़ी बात है। रिसर्च के साथ साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत जो प्रैक्टिस में मिलती है वो सोशल एक्सेप्टेबिलिटी रिगार्डिंग द आयुर्वेद मेडिकेशन। आज दिक्कत ये है कि मॉडर्न मेडिसिन और मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में इतना सारा जो है वो नॉलेज या फिर एक्सेप्टेबिलिटी है, दैट वी लैक इन दैट एक्सेप्टेबिलिटी। दूसरा, किस प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूटिलाइज किया जा सकता है और ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअलाइज मेडिसिन है, तो यहाँ पर जो है ये प्रोटोकॉल मॉडर्न में जिस प्रकार से प्रोटोकॉल रहते हैं, तो यहाँ पर हम पेशेंट के आधार पर जो है करते हैं। तो थोड़ा हमें इस पर भी जो है ये विचार करने की जरूरत है। तीसरा, 2-3 दिन पहले के सेमिनार में एक जो है ये बात निकली थी कि भाई गुडुची में ये प्रॉब्लम हो रहा है, गुडुची में एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्ट्स हुए हैं।
इंडिया की पॉपुलेशन में ये जो है वो काफी नेग्लिजिबल है, पर फिर भी दिस इज बेस्ड ऑन द रिसर्च डिजाइन फ्रॉम द कॉन्टेम्पररी मेडिसिन। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स और रसशास्त्र और द्रव्य गुण, ये इन डिपार्टमेंट्स पर भी ये जोर रहेगा कि व्हाट शुड बी दी रिसर्च डिजाइन। हम आम की बात करते हैं तो ये आम का कॉन्सेप्ट तो दिस इज ओनली इन आयुर्वेद, यू वोंट फाइंड दैट इज इन मॉडर्न साइंस। तो हम इंटरप्रिटेशन ये करते हैं और उस हिसाब से हम जो है ये हर एक का अपना अपना ओपिनियन रहता है। दिस मेक्स द थिंग लिटिल बिट नॉट एक्सेप्टेबल बाय होल सोसाइटी। साइंटिफिक वर्ल्ड जो है उसको ये एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस पर भी जो है ये हमें काम करने की जो है ये जरूरत है। तो वी नीड टू डिजाइन दोज टेक्निक्स, डेवलप दोज टेक्निक्स। आयुर्वेद की संहिताओं जो 8 मुख्य संहिता है उसमें लिखी हुई बातों को एक समय सच मान करके किस प्रकार से उन्होंने ये सिद्ध किया है, वो पहले सिद्ध करने की टेक्निक, और उसके बाद हम नया किस प्रकार से आगे डेवलप कर सके, ये करना चाहिए। दिस इज माय हम्बल ओपिनियन। Thank you very much, Sharma sir. Thank you very much, Agnihotri sir, for giving me the chance to speak, and also the audience. थैंक यू सर, Thank you very much, sir. इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके अच्छे वचनों के लिए और कॉन्सेप्ट के लिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जिंदा रखना है तो हमारे भी अस्तित्व बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम प्रोफेसर के पांडे जी को उनके विद्वतापूर्ण वचन और मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करते हैं। अभी हम चैट बॉक्स में जा रहे हैं तो वहां पर एक चर्चा आई, प्रोफेसर रामदास जी ने लिखा है कि अगर बीएमएस डॉक्टर कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनका कोई वर्क क्लिनिकली जो है एक शोधकार्य के रूप में बनता है तो उनको प्रमोट करना चाहिए। विचार बहुत अच्छा है और उसको साई साहब ने सेकंड भी किया है, लेकिन सोचना सिर्फ इतना ही होगा क्योंकि वो सिर्फ बीएमएस डॉक्टर है, क्लिनिकली उनका रिजल्ट दे रहा है उनका अनुभूत योग, लेकिन क्योंकि उनको रिसर्च की मेथोडोलॉजी, रिसर्च प्रोटोकॉल एंड उनका जो आउटपुट होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन उस फॉर्म में, जिस फॉर्म में एविडेंस प्रूफ एज माना जा रहा है आज की तारीख में, चाहे वो CCRS के द्वारा या हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा, वहां थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो यदि वो अपने उस प्रोजेक्ट को नियर बाई किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट या अच्छे ऐसे संस्थान से जोड़ सके तो उनके कार्य को तो मान्यता और बहुमूल्यता मिलेगी, उनके जो श्रम है वो भी यथार्थ हो पाएगा। ये मेरा एक अपना विचार है, अपनी मेरी राय है, और लोगों का भी स्वागत इस विचार पर। प्रोफेसर के पांडे जी, स्वागत है। एक बार सबका सब कुछ बोलना चाहिए। कोई डिस्टर्बिंग साउंड आ रही है, प्लीज जो जिनका क्रम नहीं है वो अपना म्यूट कर सकते हैं माइक को प्लीज, जिससे कि सब लोग सबकी बात सुन सके। धन्यवाद। ठीक हो गया। उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ, द मेन न्यूक्लियस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, पवन जी एंड अग्निहोत्री जी, we are the electrons moving around you, sir. Real energy are you two people. Really, this is a very nice topic to be discussed at this very first day of the year. And starting from Kamlesh ji, then Sir East ji, Amri ji, and Madan ji, and then another speakers, they told about the problems of the acceptability. Shekhar ji has very well narrated that without data documentation, our acceptance is affected. And before clinical data documentation, my humble submission, which I used to say since beginning, that first you establish your fundamental principles on a unique, universal and acceptable parameters to be analyzed and to be compared, not to be translated in terms of modern medical science. If we find this principle is working on this,
very fundamental principles have these characters, and they are correlating with the modern parameters that should be acceptable and universal. Then coming to the second aspect, clinical. In clinical, first one is the drug formulation. If we talk about the multicentric trial and data documentation, then the drug analysis is very much important. We allot the topic to our scholars in PG and MS. The drug is being prepared, but the analysis of the drug is compulsory. For the chemical compositions of a drug after formulation according to principles of the Ayurveda, the conversion of the single drug or the multi-drug, what is the formulation, and that to be mentioned. And according to that, on what parameters you are going to analyze, and that should be the universal one. And if we are able to prove our efficacy of the drug and the treatment of a particular disease, which is a challengeable, then I can say you will be accepted worldwide. Otherwise, just simply saying that the students are coming and there and here and there, many private institutions are there, but they are only on papers. There is nothing to develop our science because there is no GLP and GMP. Without that, how you are going to prove that your drug is effective? Because on non-pharmacological approach, you can prove that yoga, sadhavritta, and other things, how they are changing the life of a person. What are the changes in a living cell of a person, whether he is in America, he is in Britain, or is in India. But the ultimately changes in their living cell and their biochemistry is the universal. And that is to be taken into proper consideration. I have given my scholars to yoga scholars. They are masters in yoga, and I am using many equipments to assess the neurophysiological and physical behaviors and scientific parameters. We are getting a lot of positive results, but that is only one center result and one person result. And that the same may be applicable to the other centers where yoga and lifestyle trainings are being done. Many yoga centers are there. If you advise a person, please, these are the parameters. On these parameters, you have to check your biochemic parameters. Blood analysis, psychophysical behavior, you go to this lab and then exercise the yoga practice for 15 days or 1 month or 6 months. Then feel what are the alterations you are finding in your cell physiology and cell metabolism. Then you can prove your data documentation. The same thing will be with the clinical practice. Sekharji was saying that if you use this Ayurvedic drugs, and someone is saying that there is a professional theft, or the you can say, in other words, I will not use that one, that someone has taken the arsenic trioxide. Ultimately, problem is with us because we are not that much honest. Honest is not that one that you honestly perform the research, analyze each and every corner and every aspect of the research related with the questions. You presume the questions what may be raised by the majority of the scientific forum, and then try to incorporate those answers in your research. Then only the globalized acceptance of Ayurveda be developed, and we will be sure the day will come and when the VASUDHAIVA KUTUMBAKAM regarding the acceptance of Ayurveda, as today I have seen that speakers, scientists, and scholars of many corners of the world united, delivered their experiences, suggestions, and that one. And one more thing I would like to suggest, that one, each and every meeting minute must be sent to the authorities of the AYUSH
that today we held that was meeting and these persons attended, their views were like this, and that is the suggestion in concrete, and it should be incorporated by the Ministry of AYUSH for the globalized acceptance, and we need your support at this very juncture because time is very limited. Yes, and I'm fortunate enough that I have been part of this webinar today on the very first day with these words, one and all, with the best wishes for the 2023. Thank you, sir. Thank you. A great message from Professor K.K. Pandey, as he highlighted two things, that we should be honest for our research work. At the same time, our minutes should be forwarded at daily basis to the research authority, to the concerned authorities, so that they should know that the person crazy for Ayurveda, discussing late night, combining worldwide interested persons and having affinity towards Ayurveda and Ayush, their voice should be Thank gone you, sir. through. Thank Their you. Thank their you, voice sir. should be gone through. This is a great message, and you made our New Year or everybody's New Year with some positive note. Thank you so much. In the same continuation, I would like to invite Professor P. Sudhakar Reddy ji, because I am trying to cover whole of India from one corner to other corner. Professor Sudhakar Reddy ji, if you are comfortable, please say few words on today's webinar, so that we can have much more blessings from each and every stalwart of today's webinar. Thank you, sir. Please, Namaskar, invited. Sir, namaskar. Good evening, sir. Good evening. My all happy and prosperous year to New Year to all the dignitaries. I am very small in front of all the dignitaries, and I'm very happy that today we have stalwarts of Ayurveda, including our CB sir and KK Pandey sir, and all stalwarts of Ayurveda today joined in webinar to make it a new year a prosperity in respect of AYUSH SAMRIDDHI. That's what we can call. So we are going to propagate this AYUSH SAMRIDDHI in a different way from today onwards. And as research topic is going on, sir, I can assure that, sir, in coming future, our BMS graduates may be having research-oriented, what we can call attitude, because CCIM, now it was NCSIM, they started research methodology as a subject in final BMS since 2012. So that will definitely make a BMS graduate to think in a research attitude. So after coming out from the college with minimum BMS also, when he starts to practice, he can document the clinical case reports and the case studies. So even one case, if they successfully treated, how to document it and how to publish it, that will be knowing by these students in this present era. So in coming future, the BMS doctor definitely can able to document and make evidence of clinical a small case report or 2 or 3 case reports, so that he can improve his skills of research methodology. So that is I again needed. And my submission to sir, I am a small person, but even though I feel that the CCRS, AYUSH, EMR, that's extramural research protocol is very, very standard, sir. Because we have more than 280 Ayurveda colleges are there. And if you analyze the data of CCRS, AYUSH, EMR, it is only few colleges they have sanctioned to Ayurveda colleges. All research work is sanctioned to only biochemistry department, pharmacology department, and other medical science department. So I can agree, because the protocol may not be standardized, but still the AYUSH EMR, just if they give some relaxation in the protocol, so if they give chance to the Ayurveda colleges professors, especially because there are only few 10 or 15 projects are there from the Ayurveda colleges, all researchers from the only others than Ayurveda colleges. So if they relax little protocol, because we need a standard protocol, still little bit relaxation if they give, Ayurveda college will get definitely. And as Kamini Dhiman Madam told, so we have the topics are there in the CCRS AYUSH research portal, but that will be carried out only by the practitioners and also the faculty, those are in the colleges. So to get that research,
there is a high standard protocol, sir. That's if they realize it, we will get more chances to prove it Ayurveda evidence based. And in BA, in MD level, it is difficult for the PG students to take such a deep subjects also, because only, as he told, Agni sir, only 1.5 years will be there. So first year will be gone, and only 1.5 years, and last 6 months only examination and dissertation submission. So in the PG level, it will be difficult. But those who are practicing, private practice is there, they can also apply to EMR with any association, and then definitely they can give. But only little realization must be there, because the screening project screening committee consists of DST, DBT, ICMR, that people are there. So they will see in their view that protocol. But for Ayurveda, the protocol may not be suitable for always. So wherever some 90% chances are there, if relaxation, by giving relaxation, if they give to Ayurveda colleges, it will be good, sir. Because I have seen all the studies, clinical research documentation in CCRS website. So only few colleges are given, sir. All others are only other sciences. Okay, maybe they have more detailed protocol. Still, if they select first one and second time when they go to presentation in the CCRS, ICMR, AYUSH EMR, there they can give some relaxation. That is only my thing, sir, to make it our Ayurveda more evident all over in the global. Okay, that's what I am submission, sir. Thank you very much for giving this opportunity. And once again, happy and prosperous all the dignitaries. And I need your blessings, sir. I can't bless. I need your blessings, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Professor Reddy ji. And no doubt your words are very important. And your one-line direction for the further discussion and research and thinking, that is, we should be careful or wishful for the EMR. EMR guidelines or EMR protocol or EMR basis to be observed. I still feel sorry and say I'm still waiting for the person. I dedicated my work of MD on water disinfectants, especially I took Stretnos potatorum as a clearing nut, and we did our work in microbiology department in BHU on E. coli. So because of simply 18 months, things were done. I found that E. coli, this Stretnos potatorum's water extract got the capacity to clear the colony to some extent. Now any PhD scholar come forward, or I would have been there if, then the active ingredient, alkaloid or active ingredient of that Stretnos potatorum seed or that alkaloid could be taken into research, and an inference could be drawn that which of the active ingredient is responsible for clearing the colony of E. coli that would have gone for Padma Shri, or that in a form of tablet or in a form of capsule, it would have gone for the water disinfectant process. Today is 3 RO and all that. So this is one thing. Now in the same condition, I thank you and call Professor Ramdas PV with the request that he comes from our Vedavani language, and you are requested with folded hand that at least 5 sentences for we all means good health. You please speak in Sanskrit language. Thank you so much, Professor Ramdas. अद्यतन विषयः वसुधैव कुटुम्बकम् इत्यर्थी. वसुधा इति वक्ष्ये वसति अनेन इति वसुधा इति एकमर्थं. वसति इति वसुधा इत्यर्थं नपुंसकलिङ्गे तस्य जलम् इत्यर्थः. पुल्लिङ्गे रश्मिः इति अर्थः अस्ति, रत्नम् इति अर्थमस्ति. एवं बहु अर्थपदः वसु. वसुं दधाति इति वसुधा. दधाति इति वक्ष्ये धारयति पोषयति च, धाधातोः रूपं. तस्मात् यत्र वसुः जलं वा मधुरं वा रत्नं वा पोषयति तदा धारयति, तस्य वसुधा इति वक्ष्ये. अत्र जलमस्ति, अग्निरस्ति, रश्मिरस्ति इति वक्ष्ये कोऽत्र विशेषः? वसुधा इति वक्ष्ये केवलं भूमिः इति अर्थो नास्ति. पंचमहाभूतानां समक्षरूपः अस्ति. तादृश रूपे एव कुटुम्बकत्वं चिन्तयति चेत् अस्मत् मनसि भिन्न भेद भावाः न जायते. यदि भिन्न भेद भावाः नास्ति तत्र ऐक्यं भवति. यत्र ऐक्यं भवति तत्र विजयो भविष्यति.
एतदेव अद्यतन विषयस्य प्रामुख्यता ऐकमत्यं महाबलम् इति वक्ष्ये तदेव वसुधैव कुटुम्बकम् इति वाक्यस्य अपि अर्थः एतद् संस्कृतभाषायां वक्ष्यामि okay and actually if you think about the word Vasudha, it has got the meaning water as well as Reshmi as well as Reknam as well as the place where we live. There are different meanings. Dha, Dadu, you know that, Dharana, Poshana. So where the water is being holded and protected, where the Reshmi is being holded and protected, where the Madhura, another word, Pullinga, Vasu Shabda gives Madhura. Among the rasas, Madhura rasa is for Poshaga. You can just think of the word, the beautiful word Vasu. There are 4 in Shaptakalpadrima you refer, you can find out. There is 2 purely Pullingam, one is in all the lingas, one is purely Nabumsaka lingam. 3 lingas you can find out different various meaning for the term Vasu. Same way, if you take Ayurvedic terminologies, if you take Gunapada, you can get multiple senses out of it in multiple contexts. First, we should understand what really the guna is, what really the rasa is, in a perfect manner, in a scientific manner, just like Ojas and Vada, etc., told by some of the writing I have seen in chat. Ojas, if you take that definition, if you study, you can purely going through the modern sciences, you can find out there will be a part of hemoglobin as well as myoglobin, that which is there in the mamsa and that which is there in the recta. Both of them are resisting increasing materials. Their iron as well as oxygen are the important factors told in hemoglobin. That is very clearly told as per the definition of the Ojas in Ashtanga Hridayam. If you take the color, if you take its action, if you take things perfectly, you can just equate it perfectly. If we think in such a way, and if we do the research in such a way, certainly the Ojas will not be a Shukrandanam Paramsmadam, that we will not tell. It is something very powerful factor that which is there in our body. So if we can give that interpretation properly with the scientific things, it will be a great thing. And another thing that which I found is, everywhere if we give the Aushadha, there is metal storage, metal. See, there should be a system that after the treatment, the doctor or the hospital should test the patient and should prove that there is no metal deposit in that patient. At least 2 cases in a hospital or 2 cases in the university, if we can prove and we can take the writing from the patient, then it will be the greatest proof that which we can produce in front of any scientific committees for the approval. Because our science is bioscience. Only by testing a drug and by giving it to a bioproduct, again, there are a lot of changes. And we are giving a lot of anubanas to reduce the metal, etc., etc., etc. So after treatment, if you make a test, whether there is metal deposit is there or not, that will be a great thing that which can prove that there is no harm for the Ayurvedic things. And another one more point, the funding should be spent in a creative manner. It should not be simply given for any university or college. The government itself will start 4 regions, multiple facilitated laboratory, and there the people can directly, student or anybody, because PG students in private colleges, after fees, when they are going for the private laboratories, they are also charging 1 lakh. You just imagine, it will go to 10 lakhs. It will be miserable for the students to complete their PG. So if government is starting a lab with all facilities in every region, every student can approach, and if the research is valid, certainly the government can do certain percentage relaxation and the fund will be properly utilized directly to the person who needs. Otherwise, it will handle from hand to hand. The money will not be properly utilized. I think this is also one more the another thing. Another thing is modern scientific scholars as well as Ayurvedic scholars, like now Pavan sir coordinated our other Indian sciences. Along with that one, the modern MBBS and MS people also should join here, and they should support Ayurveda, that Ayurveda is useful, it is harmless. Such rules has to be made by the government strictly, and those associations should never speak against Ayurveda in India first. That should be the very important thing, has to be that. Even the government can tell that you do the research in the Ayurvedic patients after their cure. Such, let it be there. Such research projects should be given for them, and they should realize that there is no harm
from Ayurveda. Such things, if government can do, certainly it will be a great success for Ayurveda. Namah Shivaya, thank you very much for the opportunity. I'm only a Sanskrit teacher once again. Thank you so much. What I desired you did, that's my pleasure. And on that note, as you told that the modern medicine MD/MS scholars may also attend this development and to understand and may, if found okay, may accept Ayurveda. For your information, in our BHU, one very special privilege is there. MBBS students are allowed to seek the say entrance examination, and they may go for MD Ayurveda or MS Ayurveda in any of the subject. Though this privilege is not there for BMS pass, they cannot go for the MD MS for modern medicine subjects. But still, this was there in my in BHU and IMS. Anyway, so many things are there. You talked about the bioscience, and one thing very important, as you told that after treatment, patient can be observed that there is no metallic presence in their body. It's not like that. We give say right from Sonprashan and everything, the molecules can be there, but they not be harmful. Sona khate isliye, so that's toxicity before using. Yes. 6 months. If you continue, make a report on it. It is not doing any harm. That will be a powerful reply. No, we allow the bhasmas of metals only then when we have got studied completely of its toxicity and they are not going to damage the body. It is a myth raised by the other pathies. So please, we are not going to go in that way discussion. We had been there in BHU and so many times. BHU professor in the same stage, in the same platform, they accepted it. So this is not our issue, at least in of BHU students. This is not the matter. Then the other is there. Okay, sir. Now, just to save time, we have got 3 persons just in continuation. One, Dr. Leena ji, Dr. Mahesh Sharma ji, and Dr. CP Sharma ji. So, of course, our these guests are I would like to have, but before that, if Madam Vishnu Priya Das limit herself in 2 minutes guest speech in the form of our good wishes for VASUDHAIVA KUTUMBAKAM, and that too for the today's Gregorian New Year, I most humbly invite her, Professor Vishnu Priya Das, ma'am. Namaskar, ma'am. Yes. Namaste, ma'am. Namaste. हेलो, आप अनम्यूट करिए प्रोफेसर विष्णु प्रिया दास मैम. हेलो, she's listening. I will. If Madam Vishnu Priya ma'am taking time, Dr. Leena Karekar is here. I would like to have some message from her. Dr. Neelakshi Dev Chaudhary, she has joined from Assam. You please help so that. Yes, madam. Yes, please. Swagat hai. Welcome. There is net issue. Your voice is not audible. Not coming. Dr. Leena ma'am, can you please join us and extend your good wishes on today's occasion? I am very much sincere for the network problem. Yes, net problem is net is very slow. Dr. Neelakshi Dev Chaudhary ma'am, are you here? Yes, ma'am. Please. Yes, sir. Hello, sir. I'm here. Good evening, sir. Welcome. Happy New Year to all, sir. Yes. Sir, is my voice audible? Yes, please continue. Yes, sir. Today it was very nice discussion. Yes, thank you. It was very nice discussion. We learned a lot, and regarding how to upgrade our system, how to conduct research, how to make Ayurveda more popular among the students, how to achieve better results. We also need your good wishes from Northeast.
Sir, I'm listening to you, and it was very nice. to all of us, rather, not me only. To all of us. Okay, ma'am. There is some problem, said net speed problem with the Madam Professor Vishnupriya Das ma'am. So meanwhile, just to save time, yes ma'am, we would like to again invite Dr. C.P. Sharma ji, because without his message and blessings, we feel ourselves scared. So yes, Professor. Yes. Now it is almost better. Yes, please. Hello, ma'am, Vishnupriya ji. Yes. Yes. Namaste. Namaste ji, namaste. Thoda sa. Yes, sir. Actually, this is my yes, sir. This is the opportunity to have a blessing from all of you. So it's nothing, for the message of New Year. Only for a opportunity to have your all of your blessings, and most important things what I like to share in related to the present day special related to research. Number one, we should have a solid planning to approach the number two. The planning could be, from my point of view, as we made Red Cross for medical service, NCC for defense. Similarly, there should be some protocol of upgrading Ayurveda or taking Ayurveda into global platforms in three ways. As like Army, Navy, or Air Force, we should have three different forces for teaching, clinical, and research. And that should be headed by one particular variety of organizations. And for that, it is not easy to receive these things. But for that, we should have a system of integrations. Means in one college, the different departments are yet not integrated. Kaichiksa peoples never listen to Sangita peoples. Sangita peoples never listen to the Nidana peoples, even the Shastabruta peoples. So this government can do many ways. Government actually doing either through the RAV or NCISMs. We all know that there are many such programs or initiations are going on to upgrade Ayurveda, but still, if we will go to the ground levels, the things is not actually proportionate to the way how the government is doing. And number 3 point, that the research is not need to supposed to go through the ICMR or the WHO guidelines. We should develop, say, for example, I will take one village, and that village, I will prove that this village is free from diabetes or hypertension. That's not a research. So why not we are initiating that variety of research, that small villages should free from disease up to 70 years, 75 years. People of this village are not suffering from such all diseases, what the world is fear about. So if we'll initiate or we'll celebrate that variety of success of research, then it will be a bright examples. Say one person, Narendra Modi, our Prime Minister, he's a live model of a healthy person. So we should praise that variety of people in the village area. And the next point that is about the exaggerations or the initiations towards the public health protocols. Up to today, there is no such good book on public health. So we know that many of the institutions teaching Swasthya from social preventive medicine book. Why not that variety of books should be in our way of protocols, our Ayurvedic protocols of say Dinacharya, Rutacharya. We laugh on those things, but we have so much amount of data of live peoples who are doing this in our day-to-day routines. So our colleges, because olden days university was leading these things. बड़ा यूनिवर्सिटी जो था वो लीड करता था ये सारे चीज को. आज यूनिवर्सिटी लीड नहीं कर रहा है. आज we are not asking the university that what is your protocols. We are comparing them through ICMR guidelines or such variety of guidelines. We have new medicines are going on the research. It's okay to go through the RCT protocol, but not in other projects. And the last things what I like to share, data collections is good,
but then the data collections, I should speak the data. हमको डाटा नहीं चाहिए, हमको लाइव विलेज चाहिए, हमको लाइव इंसान चाहिए जहां रिसर्च दिखता होगा, बस हमको वही चाहिए। आज हमारा प्राइम मिनिस्टर आने के बाद वही किया, जंगल का उस बूढ़ा आदमी को लाया और उनको प्राइज दिया जिसने जंगल को बनाया। ऐसा जिसने लाइव आयुर्वेद को बनाया, उन सारे लोगों को क्यों नहीं किया जा रहा है? So being it's an independent research ethics society, I was attached from the very long periods with these regions that there will be a new horizon of research here, जिसको लेके हम एशियन सोसाइटी बनाए, हम G20 में रिप्रेजेंट करें, हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद को उस मुकाम तक लेके जा सकते हैं जहां हमारा आयुर्वेद, one day we are celebrating AYUSH clinical research. So something wrong was going on that day. I was just planning to speak some ideas there how we can lead AYUSH protocols for clinical research. So those things are still need to linger here. इतने सारे पैसा खर्चा हो रहा है, इतने सारे लोग रिसर्च में इन्वॉल्व है और बहुत सारा डाटा हमारे पास है, मोर देन एनफ। बट कहीं ना कहीं हमें ये सीखना है कि रावण को मारना है तो उसका अम्बिलिकस में मारना है, उसका मुंडी को नहीं मारना है। तो ग्लोबलाइजेशन अगर करना है तो हमारा डायरेक्शन क्या होना चाहिए, उसके ऊपर थोड़ा अच्छा चर्चा हो जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग माय ओन आइडिया एंड रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल। यहाँ ऐसा चलता है प्रचलन एवं भिक्खु कस्य बीजम एवं कर्षकस्य, यहाँ सीड नहीं है लेकिन फार्मर बहुत जबरदस्त है जो जानते हैं कि हवा कहाँ से चलता है। तो उन सारे लोगों के अंदर मैं एक पार्ट बन पाया। Thank you so much, Professor Vishnupriya ma'am. Really, now you find us that why we were unrestful as we have not heard you. It is very, very, very much expected that you will come with your innovative thoughts. One thing you raised that we have not got a good integration within ourselves as far as our departments are concerned. No doubt, but no third person will come and unite us. It is our duty to give up our ego, appreciate everybody's work, may it be of Maulik Siddhant Vibhag, Agat Tantra, Swasthravrat, surgery or Kaya Chikitsa Panchakam and Gyani. Because we are all doing for the betterment of humanity and considering the whole living body as one. So goes the case with Ashtanga Ayurveda as one. Irrespective of the lecturer, reader, professor, demonstrator, we should give up our ego. The first point you raised. The second point, as you talked about, that we have got like Red Cross or NCC. I just got an idea. Could it be a student wing of Ayurveda, right from the +2 level? You're talking about or advocating about the following of Dincharya, Adicharya, Sadhvratya, etc., which is going on and which was there in Antevyasi or the Ashram Vyavastha. As you told that the public health say book is not so much there, but fact is this, that such type of things are going on to the kids on their bed itself before they come down to the earth by their respective mothers, moms. So this could also be helpful for selecting the conceptual part of our Vedic phenomenon of Sanatana Dharma or of India, and which is now eagerly waited and accepted by the Westerners. They are searching the salvation. They are talking for the meditation. They are reciting Mahamrityunjay mantra and Gayatri mantra, coming India, going Sarnath, going Arvindo Ashram, coming Rishikesh, everything. So we have to protect our this say Sanatan Sabhyata and provocate it to our generation next. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your this guidelines. Now, what I feel that 7:30 will be the right time to wind up today's webinar, and the same continuation by what I see that a few minutes are there, almost 15 or so. So before taking some feedback out of these discussions, our respected guests are very much here of today's webinar. I again request Dr. Leena ji if she is here to say something. Meanwhile, Dr. Sadhana ji had also joined once. If she is there, definitely I would like to have our Dean Madam, her wishes
for today's webinar. And I can take some choice because 2-3 persons good discussion based on research right from Professor Sudhakar Reddy ji and Madam Vishnupriya ji, Professor Ramdas ji. सर आज अपनी वेबिनार वसुधैव कुटुंबकम पे है, वो डाइवर्ट हो गई पूरी लाइन क्लिनिकल रिसर्च पे। तो वो क्लिनिकल रिसर्च करके जो हम वसुधा को देंगे तभी वसुधा हमारी मानी जाएगी अपनी। अगर हम घर ही में रखेंगे तो ये आप परिक्रमा कार्यक्रम करिए। और इसमें हम अभी प्रोफेसर के पांडे जी को इसलिए बुला रहे हैं कि उन्होंने सुधाकर रेड्डी जी, रामदास जी और विष्णुप्रिया जी के जो विचार सुने उसमें एक वो फीडबैक अगर हमको दे दें तो उनके हाथों से हम समझते हैं बहुत बड़ी संस्था में है, हमारे बीएचयू में है, तो एक हमें ये लाइट मिल जाएगी कि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जिंदा रखते हुए और उसको अपनाते हुए उसको प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद के सार्थक दृष्टिकोण को सामने लाएं और आयुर्वेद की रिसर्च को या हमारे आयुर्वेद के बीएमएस जो सिद्ध हस्त हैं, जो हमारे पहले हमारे सारे टीचर्स जो पीजी एमडी नहीं थे वो पीयूष पाणी थे, उनकी उस धरोहर को हम आज अपने इन नई जनरेशन के साथ में दे सकें। तो वसुधा पेटेंट कराने लगी है कढ़ी को, नीम को और हमारे आर्सेनिक को, एक्विजिशंस को, तो कम से कम हम अपनी मौलिक चीजों को अपने पास रख सकें। प्रोफेसर के पांडे जी, पुनः एक बार आपका स्वागत है। कुछ कंक्लूड करने के लिए मदन सर भी अपने संग हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी उधर ही उनको हम पहुंचा रहे हैं जी। मैं पवन जी के आदेश का पूरा पालन कर रहा हूँ और अग्निहोत्री जी के भी आदेश को बस अरे सर एक दो मिनट में ही समअप करूंगा। देखिए, एक्सेप्टेबिलिटी और ग्लोबलाइजेशन दोनों बातें साथ चलती हैं और वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बहुत बात किया गया। तो हमारा कुटुंब कब बनेगा? जब एक विचारधारा के लोग हों, मतलब हमारी बात को वो समझने वाले लोग हों, तभी वो कुटुंब बनेगा। ये नहीं कि हम इधर बोल रहे हैं वो कह रहे नहीं आपकी बातें तो गलत है। तो ग्लोबलाइजेशन के लिए हमारी जो बातें हैं उनको मैं फिर से ये कहूंगा कि हमारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को मॉडर्न पैरामीटर्स पे एनालाइज करना और हमारे अपने प्रिंसिपल को स्टैंड बाय करना और फिर उनको कोरिलेट करना, नॉट टू ट्रांसलेट, कोरिलेट करना और बताना कि हमारे यहाँ त्रिदोषिक जो अप्रोच है उसमें ये मिलता है। अभी एक बीच में एक बात आ गई थी कि द्रव्य गुण की औषधियां जो हैं, आज तक मैं खुद डायलेमा में हूं, मुझे नहीं क्लियर हुआ कि व्हाट आर द फार्माकोडायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ हर्बल ड्रग्स। रस गुण वीर्य विपाक, और जहां नहीं समझ में आया बोल दिया प्रभाव। ये चीज हमको दूर करनी है, पहली चीज है। और इनके जो फार्माकोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स है, जैसे अभी मैं थोड़ा सा अध्ययन कर रहा हूँ पंचाशत महाकषाय में वेदना शामक, वेदना स्थापक जो बताए गए हैं गण, उनमें जो औषधियां हैं 10, उनका पूरे वर्ल्ड में क्या काम हुआ है, चाहे वो उनकी केमिकल फार्मुलेशन पे हो, एनालिसिस पे हो, या क्लिनिकल स्टडी हो, या एक्सपेरिमेंटल स्टडी हो, क्या क्या काम हुआ है, हमारे द्रव्यगुण के स्कॉलर को, इवन आयुर्वेद के स्कॉलर को आनी चाहिए। लेकिन वो सूत्र रूप में 10 औषधियां बता दी गई हैं, उसके बाद आगे उस पर कोई विचार नहीं करता है। तो शुरुआत हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स से, ड्रग के बारे में पता होनी चाहिए, वो नहीं है। हमारे विद्वान बताते ही नहीं स्टूडेंट्स को। हमारे साथ इंटर्नशिप के लड़के आते हैं, मैं जब उनसे चर्चा करता हूँ कहते सर आप ये हमारे बीएमएस के टीचर क्यों नहीं हुए? उन्होंने कहा हम क्या क्या पढ़ाएंगे भाई, हम तो इतना ही तुम्हें गाइड कर सकते हैं, आगे तुम्हारा स्कोप है, तुम खुद इसको इनकॉर्पोरेट करो। दूसरी बात, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे पवन सर बोल रहे थे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है, मशरूम की तरह है, लेकिन क्या वहां पर लेबोरेटरी है? क्या वहां पर फार्मेसी है? क्या जो बड़े बड़े गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर जो फार्मेसी रसशास्त्र डिपार्टमेंट है, उसमें क्या वो जो औषधियां बनती है उनकी केमिकल एनालिसिस होती है? डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं, एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट फॉर्म बना रही है, क्या उनके मानक वही हैं जो गवर्नमेंट अपने यहाँ बना के देती है? उनको फ्लैश करना चाहिए कि इस ड्रग के फॉर्मुलेशन में ये ड्रग इंक्लूडेड है और इनका अल्टीमेट जो बनता है वो प्रोडक्ट का केमिकल एनालिसिस ये है। आपकी ड्रग इससे टैली करनी चाहिए, उसका एक कोड बना दे, बार कोड। अगर वो ड्रग उस पर सही उतरती है तब यूज करो, फिर आप उसको क्लिनिकल ट्रायल में ले जाओ, उसका एक स्टैंडर्ड हमारा CCRS को बना के देना चाहिए। आपको स्टैंडर्ड हर एक कॉलेज के लिए मैंडेटरी करे, एनुअल 5 ड्रग्स, काय चिकित्सा को एनुअल 5 डिजीज,
ऐसा कंपल्सन कर दे इस पैरामीटर पे आप करिए, तो डिफरेंट जोन से हमारी कंट्री के ही एक मल्टी सेंट्रिक ट्रायल इंस्टीट्यूशन लेवल पे आ जाएगा। जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स चल रहे हैं उनको भी कहते ये टास्क, देखो भाई तुम्हारे यहाँ जो भी करते हो ऑनेस्टली हमें इस पे, और सबको लिंक कर दे। शाम को आप रिपोर्ट दीजिए, आज आपका जो पेशेंट आया ये हमारे साइट से लिंक है, आज इसकी आप फीडबैक मुझे भेजिए, और फिर वहां पर एक बढ़िया सा कंपाइलेशन होगा। तो वर्ल्ड क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा? हमारा वसुधैव कुटुंबकम बिल्कुल एक्सेप्ट करेगा। प्रॉब्लम क्या है सब जानते हैं, गवर्नमेंट को समझाना, पॉलिसी मेकर को समझाना, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को समझाना बड़ा मुश्किल है। फाइनेंस सबसे आगे आता है, रूलिंग सबसे पहले आती है। तो उस कंडीशन में जहां सर जैसे अभी कह रहे थे कि बहुत सारा वर्क अलमारियों में बंद है, अब उनको खोल के रिसर्च करना है, तो मतलब वैलिडेशन हमको करंट सिनारियो में देना है ना, तो उसके लिए हमें बहुत सारा एक निष्ठा के साथ काम करने की जरूरत है। अब तक तो जो रहा ना, हम कहते हैं आयुर्वेद नहीं मानता है, वहां पर आयुष चेयर नहीं है, यहाँ पे नहीं, हम अपनी जिस चेयर पे बैठे हैं उस पे कितने निष्ठावान है, पहले हम इसको देख लें कि हमने आज तक जो गया तो गया, अब लो नसानी अब न नसइयो। अब वो समय आ गया है कि आप आगे आने वाली जनरेशन को क्या देने जा रहे हो। मैं तो सचमुच दिल से धन्यवाद देता हूँ, अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस फोरम से मैं जुड़ा और आप लोगों ने मुझे इतना स्नेह प्यार दिया। लेकिन हम जिस जगह पे है उसमें कितने निष्ठावान है, हमारे पास पिछले 20-30-35 साल का अनुभव है, हम अपने स्कॉलर्स में कैसे उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। नॉलेज जब तक ट्रांसमिट नहीं होगी, ट्रांसफर नहीं होगी और एक बढ़िया रिसेप्टर उसको कैच नहीं करेगा, फिर उस पर बढ़िया एनालिसिस और डिस्कशन नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। एक छोटा उदाहरण, मैं समय नहीं लूंगा। प्रोफेसर RS सिंह जी जब यहाँ पे डीन फैकल्टी थे तो उन्होंने कहा कि साइंटिफिक फोरम बनाया जाए, रिसर्च फोरम, पांडे जी आप कोऑर्डिनेटर बन जाओ। हमने कहा ठीक है सर, बन गए, आपका आदेश है, बन गए, लेकिन मेरी शर्त होगी आइदर यू सिलेक्ट वन डिजीज और वन ड्रग एंड आस्क ईच एंड एवरी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स टू वर्क ऑन दिस वेरी इश्यू, उनके यहाँ क्या क्या मिलता है और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वालों को बोलो कि आप ये क्या करते हो। अभी निदान की ओपीडी दे दी गई, स्वास्थ्यविद की दे दी गई, सबकी दे दी गई, लेकिन अभी क्या है, मेरा अपना ओपिनियन है कि ओपीडी में पेशेंट आए तो सबसे पहले उसका नैदानिक परीक्षण होना चाहिए त्रिदोष सिद्धांत के ऊपर, और फिर उसकी जो बीमारी है आप उसको बता दो, भैया तुम्हारा दोष ये है, तुम्हें ये विकार है, इस स्थान की विकृति है, ये यहाँ पर संसर्ग, ये जो है वो हो गया है, स्थान संशय हो गया है, अब व्यक्त अवस्था ये है, अब तुम इस डिपार्टमेंट में जा सकते। लेकिन नहीं, हर आदमी अपने किसी न किसी इंटरेस्ट से डायरेक्ट पेशेंट को अपनी ओपीडी में बुलाता है और ये सोचता है कि मैंने इसको ठीक कर दिया। नहीं, सिस्टम से चलना पड़ेगा सर, पांडे जब जी, तक ये समझदारी नहीं होगी मुश्किल है। क्षमा करें, प्रोफेसर विष्णुप्रिया जी यही तो कह रही थी कि हमारे इंटर डिपार्टमेंटल जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो होगी, तभी ये होगा, ईगो हटा के हो पाएगा, और ग्रेटर कॉज के लिए होगा। हम ग्रेटर कॉज के लिए काम करेंगे तब तो कर ले जाएंगे। जी जी, जब हम आयुर्वेद के स्कॉलर के, जब ये कहें कि हम आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, हम सचमुच में आयुर्वेद के स्कॉलर हैं, अपने अंदर ये विश्वास हो जाए, आईना लेके खड़े हो जाएं और कहें कि रियली हम आयुर्वेद के हैं और आयुर्वेद की तरह सोचते हैं और देश के लिए सोचते हैं। हम वो जो बीत गया 4000 साल पहले वाला उसको फिर से स्थापित करें, तब मजे की बात आएगी। और हमें ये समझता हूँ कि इतने वैज्ञानिक और विद्वान जुड़े हुए हैं इस फोरम से, रियली ये फोरम बहुत धन्य है कि ऐसे ऐसे विद्वान जुड़े हैं, सबकी बातें सुनने को मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी कभी ग्लानि भी होती है, क्षमा भी मांगता हूँ मन से कि आज मैं जुड़ नहीं पाया, लेकिन क्या करूँ सर, जिम्मेदारियां भी बहुत सारी हो जाती हैं। बहुत धन्यवाद आपका, पुनः आपके ज्ञानवर्धन का, आपके इनपुट्स के लिए। वी आर रियली so much thankful for your all directions and inputs. Really, you talked one sentence that is, I think, first and last, that we should try to correlate the situation, our knowledge, not to translate. If this much will be communicated, that we will stand for Ayurveda, the other party, those who are not understanding, they just try to correlate it. Thank you so much. And as per our professor, Namaskar sir, as per our professor Pawan Sharma ji's instructions, now we have got a great time to wind up, and for that we would like to invite with a very respectful manner Professor Manan Thang Veluji, as he at very early gave
extended his blessings, his greetings for New Year, and also touched the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which is the topic of today's. We would like to have an overall view of today's webinar's topic discussion, and then our good wishes, of course. So, Professor Madan Thangwalji, welcome you. Thank you, sir. Agnyosji, Pranamji, thank you for, I've been listening very closely to all the presentations. And I just wanted to share one or two things, which is touching the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. I put this in the chat box, Agnyosji. Ek hai ji, where is this work going on? Several points that came out. One in particular is the micro research work. You know, how can we, jo Reddy Saab ne jo bataya, how can we take the work that we are doing and make it into a format that is conducive for small scale research? And I think Ramadas ji has also touched on this point nicely. He keeps reminding us that we need less hospitals, more connecting with the community. And to bring this along, to tie this along with the larger perspective, I'm sharing here my screen, Agnyosji. This is from Uganda. Uganda, there is a small company, and I don't know the company. I have just only seen their website. And this is an expression of how the community level activity is happening. And this is a model that we can learn from. And here you can see the formulation called COVIDX. This was, and you will see this is used as a nasya for droplet, you know. And you can see how effectively they have taken forward a simple nasya formulation, which seems to be effective there. Now, this is coming from Uganda. Now, if you look at this, there are many lessons for us. It seems like we can learn so much from this community, and we can also take our message there and bring this relationship with Uganda as part of this community of interacting with other nations. The second point I want to touch briefly is again from Uganda, and it is from one of their science and technology universities. And it's a workshop that is later in 2023. I have put this on the chat box. I'll share the screen here for people who are not able to join us. And they use a very important concept here called micro research. Now, I'm echoing Dr. Professor Reddy's comment here about the protocols that are demanded by CCRAS and how those protocols can be modified to be conducive for small research projects that can be done in our colleges. And this is one example, and the term they are using is micro research. And it says, what is micro research? The research concept aims at improving health outcomes through small, locally driven multidisciplinary teams developing and implementing research projects. Now, Ramadas, this is an exact formulation of what Ramadas ji and Vishnupriya ji are trying to tell us, that there is an opportunity to take small areas of research and then convert them into small projects that are within the scope and the limitations of a college environment, and with guidance and with a small amount of research funding. Perhaps we will have to look at the modalities for this, how you can enable research projects, whatever those projects are. And if you look within here, there is a program here called the Healthy Child Uganda program. And this is a very valuable program for us. If we look within here, I put this again in the website, Global Health Uganda, a multidisciplinary research collaboration. And I feel here is another model that is coming to us from Africa. And if we open our minds to this whole idea of a global family, then there are examples there that is important for all of us. Here, our mission is to promote child health by conducting and facilitating quality and relevant research in child health
neurodevelopment, and interventions. And if you look here, you can see how that global family is being formed. You have universities from America connecting with universities in Africa. And it's an excellent example for how we can enable that, not only the Vasudhaiva Kutumbakam philosophy, but also take the best of what is available in different parts of the world and make it relevant for our society, or whether we can. India offers excellent opportunities for taking forward some of these directions, and especially the small private universities. Pandeyji was right in saying there is a mushrooming of these universities, but then let us also find a way to give them some responsibility. And Professor Reddy's comment is very important here, that we should take something that is available at CCRAS. And maybe my comment in the chat box was maybe we should use that as an opportunity to open a dialogue with CCRAS. Saying, CCRAS, your protocol, extramural research protocols are too complicated for our students. Please let us come to some micro research projects. And as Pandeyji correctly cited for Professor R.H. Singh's comment, which is that we take one or two formulations. Today I was talking to some colleagues, to our AYUSH professor in Riga in Latvia, and we were talking about diabetes, and we were talking about Nishamlaki, formulation that is known for such a long period of time. But where can we refine this formulation, and where can we gather data? And can we do simple micro research protocols? It doesn't have to be such extensive research. Here, example is a MIND study. It's a longitudinal study with 5-year follow-up where caregivers and children with the 5 most common forms of malaria are studied. And there are so many lovely examples of this kind. Could we engage in those spaces? Could we highlight some of those areas where we have the mastery? We have resources like the TKDL, 300,000 formulations. We have knowledge of at least 1,500 herbs that are used routinely, and maybe over almost 7,000 herbs that we have documented. There is so much, there's so many possibilities here. Till recently, our High Commissioner in Uganda, Dr. Paul, who's a modern medicine doctor who studied medicine in All India Institute of Medical Sciences, he has now become our ambassador here in Turkey. Turkey is a country with equally rich thinking about herbs and old systems of medicine. Maybe there is something that we can do, and in this way, really bring out the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam in a very practical way. And I feel today's discussions, Agnihotriji, we have touched on so many valuable points, so many perspectives, and these perspectives add the richness that we want in these discussions. So thank you once again to Pavanji for hosting us, growing this platform. Agnihotriji, my apologies here that somehow I've had to drop back because it clashes with our time period here, especially with the 5.5-hour time difference between India and UK. It really clashes deeply with many of the things that are going on here. And so it's best that I kind of take a slightly back foot here, but at the same time, I'm excited with these innovations that are coming, that we are seeing in Africa, and an opportunity for India and Africa to come together and really take forward this vision of the future, for the future of health. And I'm hoping out of the G20 meetings that I'm somewhere getting more and more involved with, that we will get this message to our ministries, not only Ministry of AYUSH, but also Ministry of External Affairs, that these are discussions that we are having, and these are things we have found, and we have a vision for the future. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Namaskar. Thank you so much. And I do understand that how much you are busy, and still your business makes us crazy that where you are and what you are doing, and the reality is in front of us. That you talked about the this Pune's conference and also preparations for G20 in India.
At the I just same want time, to, Yes, sir. Agnihotriji, before I leave today, this is for those who could not attend the conference, the Pune conference. Right. Better Tomorrow for Cancer with Ayurveda. This is a small booklet. The second one is a rich abstract book on the 6th International Conference on Ayurveda for Cancer. And this is a rich, let me see how many pages. I don't know if it is page. There are almost 100 pages of abstracts here in this book with remembering Sir Deshmukh ji and all the work that is going on in cancer-related formulations. And I think the comment made about how we could monitor patients. There are case studies here, 10.5 years of disease-free survival in triple-negative breast cancer patients and many other cases here. And I was very excited to meet with Professor Reddy's wife, Dr. Beena Reddy, who is presenting and working for her PhD on stage 4 cancer patients using Ayurvedic formulations. He presented case studies. It is unfortunate that our colleagues who are interested in that space could not be with us because it clashed with the World Ayurveda Congress, but all the talks are recorded and they will be available for all of us to review. There is a lot happening in the, Agnihotriji, there's a lot happening in the field, and somehow the connection is not happening. And I'm taking this opportunity just to highlight an important event that took place in India, and great credit for Ayurveda for taking such bold steps in this area. And the whole world will be interested in these things. So today's theme is very, very important. And thanks to yourself, thanks to Agnihotriji, thanks to all our senior colleagues who are here with us today. Thank you, sir. Thank you so much, especially for sharing these booklets which are related with our Pune conference. I wish I would have been there. I was there up to late October, 28th October, but it was delayed. But still, I know wherever something happening in the field of Ayurveda or by the Ayurvedic persons or the Ayurvedic researchers, you are very much there, either or your good wishes are always there. So I found that your inclination and your interest on these development is making us very sound, especially when you put forward for today's topic, the Uganda's preparation. Now see, Uganda is country which they are promoting their preparation with a small herbs. What more we need? If Uganda country like government or the people can do anything, we definitely hope that we can do better, and we are doing so much. Your presentation on this topic, even in the scarcity of time, that made us pleased that how much you are inclined to our Ayurvedic system and how much you are well prepared for any of the occasion if the time and is there and your invitation is being accepted by you. So thank you so much, sir. You made today's webinar international, definitely. Thanks so much. And with these assumption, I extend my heartfelt thanks to all the guest speakers of today's webinar topic, and also all the big guys who joined our this platform of webinar. I hand over today's this conduction to Professor Pawan Sharma ji for the further proceedings. Thank you, sir. Thank you all. Professor Pawan Sharma ji. हरिओम सर। हरिओम। बहुत अच्छा लगा, आज वसुधैव कुटुंबकम की पूरी वेबिनार एक गजबी मोड में हुई और सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आदरणीय ताम्रकार सर हैं, बाबुल ताम्रकार जी, हमारे प्रिंसिपल फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद मानसरोवर यूनिवर्सिटी। वसुधैव कुटुंबकम। साधना जी जुड़ेंगी, साधना जी जुड़ेंगी, पता नहीं शायद। सभी को सर बहुत बहुत शुभकामनाएं नव वर्ष की। आपको, आपके परिवार को, सभी सदस्यों को। चलिए, आपका वेबिनार बढ़िया चल रहा है सर। ये एक बहुत बढ़िया एक मतलब इतना लंबा पवन जी की मेहरबानी है लगातार सब जी, ये पवन शर्मा सर की मेहरबानी है ये कॉन्फ्रेंस, और ये वसुधैव कुटुंबकम के सिनोनिम है। जी जी जी। और आप बहुत लकी हैं जो पवन सर आपके साथ जुड़े हैं। जी नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य सर, मार करके चलता हूं।
and dedicated person. जी 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 चलिए सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उन नववर्ष की। बहुत बहुत थैंक यू सर। गुड नाइट टू ऑल। Good night, जी, गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट। अग्निहोत्री जी, शुभ रात्रि। पांडे जी, शुभ रात्रि। ऐसे शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि। काउंटडाउन शुरू हो गया था ना, तुमने कहा शायद बंद हो गई। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज आप जुड़े, बहुत दिनों बाद। वेरी बिजी पर्सन, उनको एक आयुर्वेद की तरफ से कुछ एक डिग्री देनी चाहिए। बिजी क्या, वेरी इन्वॉल्व पर्सन, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन मेडिकल फील्ड और इन फील्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, he is really and his size is over to any degree, oversized person for degrees. Yes 1000% true. चलो थैंक यू। आपको बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आपको
ये त्रिलोक नारायण जी का नंबर नहीं है?
ओम प्रकृति के बाजू सबाजू जन्म सफल बाजू प्रकृति के बाजू सबाजू जन्म सफल बाजू अति बड़ी मोरी जिठाई खोरी सुनी अग नर कहु नाक सकोरी समुझ सहम मुहि अपडर अपने सो सुधि राम कीन नहीं सपने सुन सुनी अब लोक सुचित चख चाही भगति मोरी मति स्वामी सराही कहत नसाई होय हियनी की दीजत राम रानी जन जी की रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरति सय बार हिए की जही अग बधु व्याध जिमि बाली फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली सोई कर तूतिक विभीषण केरी सपन्यो सुनन राम हिय हेरी ते भरत ही भेंटत सन्माने राज सभा रघुवीर वखाने प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु तरु तर कपिडार पर ते किए आप समान तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान सियावर रामचंद्र की जय प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू राम निकाई रावरी है सब ही को नीक जो ये यह साची है सदा तोनी को तुलसी सियावर रामचंद्र की जय प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू तेहि विधि निजुगुन दोष कहे सब ही बहुरी सिरनाई बरनौ रघुवर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई सियावर रामचंद्र की जय प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू जाग बलिक जो कथा सुहाई भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई कहीं हम सोई संवाद भवा बखानी सुनो सकल सज्जन सुकुमानी सम्मुखीन यह चरित सुहावा बहुत कृपा करी उमहि सुनावा सोई शिव कागव सुंड दीना राम भगत अधिकारी कीना तही सन जाग बलिक पुनि पावा तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा ते श्रोता वक्ता समशीला सौतरसी जानहि हरि लीला जानहि तीन काल निज ज्ञाना कर तलगत आमलक समाना और जे हरि भगत सुजाना कहाँ ही सुनहि समुझहि विधि नाना प्रभु की कृपा भजो सब काजू जन्म हमारा सफल बाजू प्रभु की कृपा भजो सब काजू जन्म हमारा सफल बाजू मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत समुझी नहीं तसी बालपन तब अति रहूं अचेत सियावर रामचंद्र की है प्रभु की कृपा सब काजू जन्म हमारा सफल बाजू प्रभु की कृपा भजो सब काजू जन्म हमारा सफल बाजू श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गुण किमि समझो मैं जीव जड़ कलि मल ग्रसित विमूढ़ सियावर रामचंद्र की जय प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू प्रभु की बाजू सब बाजू जन्म सफल बाजू तदपि कही गुर बारही बारा समझ परी कछुमति अनुसारा भाषा बद्ध करबि मैं सोई मोरे मन प्रबोध जहि होई
जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहीं हो हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी। राम कथा कले पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगिनी। असुर सेन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुलहित नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति धेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिय हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुवर भगति प्रेम परिमिति सी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा मंदाकिनी। चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन। सिय रघुबीर बियार सियावर, रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमत तिय सुभग सिंगारू। जन मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुति धन धर्म धाम के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। काम कोह कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से। अभिमत दान देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नव मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। कुपथ कुतरक कुचाली कली, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी, धन अनल प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विषेख बड़ बलाहु। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु करब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई।
जेहि विधि यह जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जनियाचर जु करे सुनि सोई। कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचर जु करहि यस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुर आनी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनिए आचर जुन मानि हहीं, जिनके विमल विचार सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनऊ कर जोरी, करत कथा जही लाग न खोरी। सादर सिवहि नाई अब माथा, वरनु बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631, करऊँ कथा हरिपद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहीं राम कल कीरति गाना। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल बाजू। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा विमल मति। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साहि काम मद दम्भा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। मन करि विषय अनल बर जरई, होई सुखी जो एहि सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कुल कलुष नसावन। रच महेश निज मानस राखा, पाई समो सिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर, धरऊ नाम ही हेरि हर्ष हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। जनमानस जहि विधि भयो, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि मुआ विश्व केतु। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भाजू।
लंका कांड 39-40। Very